Yeah, good morning, everyone. Professor Vivek Joshi from Computer Science and Engineering Department, heartily welcomes you all for two on second day of online bootcamp 2022. So, on this beautiful day, today we have Dr. Chintan Pathak with us for our first session. So, Chintan sir, I heartily welcome you on behalf of RNG Patel Institute of Technology and thank you very much for accepting our invitation. Dr. Chintan Pathak is by professional lawyer, by heart educator, and by passion social entrepreneur. Sir has wide 19 years of experience as a tech lawyer, attorney, privacy lead assessor, educator, cybersecurity consultant, and ethical hacker. Sir is a managing partner at Dr. Chintan Pathak and Associates Law Firm. Sir is also a consultant at Cyber Care Clinic, Techno-Legal Consultancy, and Mobile and Technology De-Addictive Center since 2011. Sir is a president of Child Online Protection Foundation of India. Sir is a founder of startup Vivekam My Cyber Sarthi. Sir is also a president of Women Internet Safety Education and Vision of Tomorrow Charitable Trust. Sir acts as a lead partner with UNICEF, SMC, and Child Friendly Smart City Knowledge Center for Child Online Safety. Sir is the ex-president of All India Information Technology Association for South Gujarat region. Sir is an advisory board member of Pro Bono India and Legal Startup and Board of Study member of Veer Narmad South Gujarat University and Banking Committee of Charter Chamber of Commerce. Sir is also act as Vice President of South Gujarat Pradhyapak Prakshan Mandal and associated with Honorable PM's Brain Child Project Cyber Suraksha Kavach. Sir is professionally associated with many organizations, many institutions of Gujarat as well as different states. Sir has delivered more than 550 seminars, webinar, training and workshops for leading institutions of the country of students, police, judges, advocates, CA, doctors, etc. and address more than 25 lakh students and parents through cyber safety of all awareness campus with Surat City Police during National Book Fair and also through seminar in school and colleges. So I heartily welcome Dr. Chintan Pathak, a very eminent personality for uh, this boot camp. So once again, thank you very much, sir. Now I request Dr. Chintan Pathak, sir, to please enlighten us with some basic terminologies of cyber security. Over to you, sir. Yeah, namaskar to everyone. Thank you, Vivek Bhai, for the introduction. I am really appreciate Dr. Latesh Chaudhary, sir, who is the principal of the RNG and Patel Institute of Technology. I really thankful to Dr. Madhvi Ben Desai, who invited me for this session, and really to entire staff member of the RNG Institute of Technology. Uh, before going into the subject, થોડીક વાત જે મને વિવેકભાઈએ કીધી કે આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ બી પ્રેઝન્ટ ધીસ સેશન ઇન ધી હિન્દી એન્ડ ગુજરાતી સો દરેકને કમ્ફર્ટેબલ લેંગ્વેજમાં રહે સો આઈ ટ્રાય ટુ બી મેક શ્યોર ટેકનોલોજીકલ પાર્ટ છે ઘણા વર્ડ્સ થોડા ઇંગ્લિશમાં હશે પ્રેઝન્ટેશન ઇંગ્લિશમાં હશે બટ યા આઈ સ્ટીલ ગોઈંગ એન્ડ ટ્રાય ટુ બી મેનેજ કે જેનાથી મેક્સિમમ આપણે તમને ખ્યાલ આવે એ રીતે આપણે વાત કરી શકીએ. Now, I really appreciate the initiative taken in this boot camp with the entire RNG Patel Institute of Technology team. બહુ મહત્વની વાત છે કારણ કે આ સમયની અંદર બિફોર ગોઈંગ ઇન ટુ ધ સેશન કાં તો કોઈ પણ નવા કોર્સને આપણે જ્યારે સિલેક્ટ કરીએ છીએ કોઈ પણ નવું કેરિયર સિલેક્ટ કરીએ છીએ તો એ વખતે આપણી પાસે એ કેરિયર માટેનું કંઈક બેઝિક બેકગ્રાઉન્ડ ખબર હોય એની ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને ખબર હોય આપણે ફ્યુચરમાં કઈ રીતની આપણને તકો મળશે ધારો કે આપણે આ કેરિયરને સિલેક્ટ કરીએ છીએ તો બેટર છે કે બેટર યુ કેન જસ્ટ ગો થ્રુ વિથ ધી વોટ આર ધી ફ્યુચર પ્રોસ્પેક્ટ એના કયા કઈ રીતના છે તે અલગ અલગ જે એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે કઈ રીતે આપણે આના પર વધારે વર્કઆઉટ સારી રીતે કરી શકીએ એક રોડ મેપ આપણને વિઝનનો મળે તો તેના માટે ઇટ્સ રિયલી વેરી ગુડ ઇનિશિયેટિવ બાય ધી
the team of the RNG Patel Institute, because હું એવું માનું છું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને છે તે કોઈક વસ્તુને માટે કહે કે આ ફિલ્ડ સારી છે પેલી સારી છે, એના કરતાં बेटर છે કે आप वो फील्ड में जाए जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी आपको पसंद हो, या फिर आपको लगती हो कि नहीं ये फील्ड में मेरा लाइकिंग भी है और ये फील्ड में मेरी मुझे कुछ आगे जाके मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट. एंड मे बी દેટ માય સ્ક્રીન ઇઝ વિઝિબલ. સો વિવેકભાઈ એક વાર રિક્વેસ્ટ છે કે મારો સ્ક્રીન તમને એટલે કે મારી પીપીટી Sure. વિઝિબલ છે કે નહીં, જસ્ટ કન્ફર્મ. Yes, sure, sir. So my screen is visible now. Yes, yes, sir. Your screen is visible. You can full screen your presentation. Okay, okay, fine. So before starting the session, this is a very small disclaimer, because that I am just telling whatever the information today I am giving you is collected from the authorized sources. I am not saying that is error free, but I try my level best, and the presentation made for the general awareness purpose and non-commercial use. Thank you. So, welcome all of you in the fundamentals of the cyber security. Is really a growing field, and I really appreciate કે ભાઈ આવા ટોપિક પર ચર્ચા કરવાનો જે ખરેખર મને મોકો મળ્યો છે, કે અત્યારે જે રીતે મીન્સ એવરીથિંગ ઇઝ ઓનલાઈન. ઇન ધ લાસ્ટ આપણે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોઈએ છે કે ઇન ધ પેન્ડેમિક નાउ એજ્યુકેશન બી આપણે ઓનલાઈન ભણતા આવ્યા હતા. I had a couple of couple of question to all of you કે મે બી પોસિબલ કે કદાચ ઓનલાઈન મીડિયમમાં ભણવાનું બધાને કમ્ફર્ટેબલ લાગ્યું નહીં હોય, but I just try to be give you a second side of this thing કે કદાચ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપણે બહુ ક્વેશ્ચનિંગ કે બહુ વધારે પડતું ડીપમાં નહીં જાય, પણ આની એક સારી વાત એ છે કે ઇફ I am right now in Surat, and right now you are in the different part right of the Gujarat, or maybe that in the Bardoli or nearby areas, તો તમે આજે તમારા લેવલથી ત્યાં આગળથી તમે આપણે બંને શેર આપણી વાત કરી શકીએ છીએ. I am not going to be travel with your place, and we can just share whatever we want to do. So this is a really a great part. I'm not saying कि भाई offline नहीं हो, जो offline is a mainstream, but yes, online is also important. So I start my presentation with the saying of the Swami Vivekananda. My hope of the future lies in the youth of character, intelligent, renouncing all for the service of others, and obedient, good to themselves and the country at large. મિત્રો મારું કેવું એવું છે કે સ્વામી વિવેકાનંદ આપણા આઇકોન હતા, કે આપણા યુથ આઇકોન તરીકે આપણે જોઈએ છે. અને એમની એક વાતની એક જે હતી કે ભાઈ યુથ પર કેટલી એના યુથ માટેની કેટલી એમને શ્રદ્ધા હતી કે એમનું જો કેરેક્ટર બિલ્ટઅપ સારું હોય, ઇફ યુ આર ઇન્ટેલિજન્ટ, તો એ તમારે કેવી રીતે તમને છે તે કામ લાગે છે, તો કે ભાઈ યુ કેન બિલ્ડ અ ગુડ સોસાયટી. તમે તમારી જાત માટે તો સારું જ છે, પણ યુ કેન બિલ્ડ અ ગુડ સોસાયટી એઝ વેલ એઝ ધી કન્ટ્રી. સો અગેન દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમારા પર આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ આપણે ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ન્યૂ ઇન્ડિયા. સો ધ ન્યૂ ઇન્ડિયા ઇઝ વોટ? તમે છો ન્યૂ ઇન્ડિયા, અને ન્યૂ ઇન્ડિયાનો રોલ શું છે that we are going to be discussed. Now, mistakes increase your experience, and experience decrease your mistake. If you are learn from your mistake, then your other learn from your success. મિત્રો you all are using the different technology, and number of time જાણે અજાણે maybe આપણે ઘણી વખત ભૂલો કરતા હોઈએ, કાં તો ભૂલો થઈ જતી હોય આપણાથી. Maybe that we are sharing something which is not appropriate. Maybe that આપણે કોઈક વખત કોઈ ભૂલથી કોઈ છે તે કોઈક પિક્ચરને આપણે મોર્ફ કરી દઈએ, ક્યાં તો આપણે કોઈક ઈમેલને ફોરવર્ડ કરી દઈએ, ક્યાં તો આપણે છે તે કોઈક એવા કન્ટેન્ટ્સ ફોરવર્ડ કરી દઈએ કે જેનાથી સામેવાળાને છે તે તકલીફ થાય. તો મે બી દેટ ઇટ ઇઝ બાય પાર્ટ, તમે કદાચ ભૂલથી થઈ શકે, પણ એ ભૂલ પછી બીજી વાર રિપીટ નહીં થાય એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આઈ એમ પર્ટિક્યુલર ટોકિંગ ઇન ધ કોન્ટેક્સ ઓફ ધી ઓનલાઈન મીડિયમ. અને ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ જે આપણા મિસાઇલ મેન તરીકે આપણે જેને ઓળખીએ છીએ, તો આઈ એમ બેઝિકલી હું એવું માનું છું કે લાઈફની અંદર તમારા જો કોઈક મોટિવેટર હોવા જોઈએ, ક્યાં તો કોઈ તમારા જો કોઈક રોલ મોડલ હોવા જોઈએ, તો એવા વ્યક્તિ હોવા જોઈએ કે જેની પાસે તમે કંઈ શીખી શકો. સો ધીસ ટુ પર્સન ઇઝ માય પર્ટિક્યુલરલી આઈ એમ સેઇંગ દેટ કે હું જેને માનું છું, અને જેના થકી કદાચ હું આ વસ્તુ કરી શક્યો છું. સો અગેન ઇફ યુ આર લર્ન ફ્રોમ યોર મિસ્ટેક, દેન અધર લર્ન ફ્રોમ સક્સેસ. તો એકવાર ભૂલ થયા પછી વારે વાર રિપીટ નથી કરવાની. તમે એકવાર ભૂલ થઈ જાય, બીજી વાર નથી રિપીટ કરતા, તો દેન યુ આર ગોઈંગ ટુ બી સક્સેસ, અને લોકો તમારી એ સક્સેસ પરથી શીખશે. So this is a very important thing. Now,
फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी का जो फंडामेंटल्स की जो बात है, बिकॉज देर इज वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे ऑफ द वन ऑफ द कंपनी कॉल पिंकरटन। ये सर्वे में क्या कहा गया था, अगर अगर ओवरऑल रिस्क रैंकिंग इंडिया का हम लोग देखते हैं, नॉट ओनली द इंडिया, आई एम टॉकिंग विद राइट नाउ इंडिया, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। सो द फर्स्ट हाई रिस्क एरिया इज इंफॉर्मेशन एंड साइबर इनसिक्योरिटी, और उसके बाद आता है टेररिज्म, फायर, क्राइम, नेचुरल हैजार्ड, दिस ऑल आर कमिंग आफ्टर दैट। So why I am telling like that? Because technology is going nowadays very fast. If you see that कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब 2014 में जब डिजिटल इंडिया की बात की, तो लोगों को ये लगा था कि यार डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे हम लोग ये ट्रांसफर कर पाएंगे, और पूरा ई गवर्नेंस सिस्टम कैसे बनेगा। लेकिन आज देखिए, अगर थैंक्स टू दी देयर इनिशिएटिव, क्योंकि आज जो सिस्टम जो 2 साल हमने बिताया और उसमें हमने कहीं ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग, बट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के कहीं ऐसे भी पहलू है जो हमें आज समझने होंगे। तो इनसिक्योरिटी की जब बात करते हैं, ये फर्स्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि इनसिक्योरिटी की जब बात होती है, तो इसका मतलब है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन द इंटरनेट, और इसके लिए ये जो साइबर सिक्योरिटी का ये जो फील्ड है, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको इसके ऊपर से पता चलेगा। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड विद ऑल ऑफ यू। नाउ ये भी हमें समझना होगा कि फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट, ये कि आप ग्लोबल मोबाइल ट्रैफिक अगर आप देखते हैं, तो देखिए किस तरह से इंक्रीज हो रहा है 2011 टू 2021। आप अगर देखते हो तो 6% टू लेके 56% नाउ डेज। आप अगर आप देखेंगे तो एवरी पर्सन हैज देयर ओन फोन, आई थिंक देयर अ स्मार्टफोन, और ये सारे स्मार्टफोन क्या करते हैं हम आगे की बात करेंगे, लेकिन दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी स्केलिंग, राइट। So again, it show that what is opportunity in this particular field, right? Now, number of internet user worldwide. Now, again, if you see that chart, if you can clearly see that कि जो users थे वो continuously बढ़ रहे हैं। Now 4.66 billion user right now in all over the world of the internet, right? And that's why it's really a very growing field. It's a promising field. देखिए, मैं ये इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि इससे आपको ये फील्ड की अपॉर्चुनिटी पता चले, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर ये आपको अवेयरनेस होगी, आपको मार्केट साइज पता होगी, देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू बी परस्यू द कैरियर इन द साइबर सिक्योरिटी। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। नाउ अगेन, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये एक जैसे हमारे होटल में एक मेनू होता है, तो मेनू में हम लोग कहें कौन कौन सी आइटम होती है, हम लोग उसको बताते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, मुझे साउथ इंडियन खाना है, पंजाबी खाना है, या मुझे कुजन खाना है, कुछ भी अगर मुझे खाना है, तो देर आर द आइटम नेम एंड देयर इज अ प्राइस। नाउ सी द साइबर वर्ल्ड के अंदर भी एक मेनू चलता है, और ये मेनू के अंदर डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड की गई है। और ये सर्विसेज क्या है बेटा? ये सर्विसेज है कि भाई अगर किसी का सर्वर हैक करना है, तो देयर इज अ प्राइस इन द बिटकॉइन एंड यूएस डॉलर, राइट। तो यहाँ पे प्राइस लिखी है 200, 500, दिस आर द डॉलर्स, एंड द बिटकॉइन ऑफ कोर्स उसके तो रेट्स बदलते रहते हैं, आपको पता है। अगेन दैट सेटिंग ऑफ द की लॉगर में क्या होगा वो बताऊंगा, लेकिन की लॉगर को सेट करना है, कोई पर्सनल कंप्यूटर को हैक करना है, मुझे कोई ईमेल हैक करना है, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना है, तो ये सारी चीजों के बकायदा ये सारे रेट्स ये आते हैं डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सी अगेन दैट व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग, ये चीज ये बताती है कि इसका जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी का जो एरिया है, वहां पे इफ यू आर वर्किंग एथिकली, if you are some companies hiring you to protect the data, protect the system, then again there is a lot opportunity in this field. Now this is why we need to be understand this picture very clearly, friends. ये पिक्चर आपको ये बताता होगा कि 2010 के अंदर हम जैसे पतंग चगा रहे थे, राइट। एंड अगेन दैट इन 2020 वी आर प्लेइंग और वी आर फ्लाइंग अ ड्रोन, राइट। So drone is an upcoming technology. So this is how this particularly the scenario is changing, how the technology is evolving in day by day. So that is a really a very good example. नाउ ये मैं शेयर हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि जनरली ये परसेप्शन हमारा ये रहता है कि वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और क्यों ये फ्री की जो बात है मैं इसलिए इसमें कर रहा हूँ क्योंकि 3 साल पहले व्हेन द जियो लॉन्च द इंटरनेट, वी यूज्ड टू विद द फ्री डेटा 1 GB 2 GB,
और कई बार आपने ये देखा होगा कि लोग 1 GB 2 GB जब तक खत्म नहीं होते तब तक दे आर कीप शेयरिंग, दे आर कीप डूइंग ऑन इंटरनेट, दे आर कीप डाउनलोडिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, गेम्स और OTT platform, they are keep using. But now we can clearly see that, okay, no, but internet is using you. It means that because you are wasting a lot of time on the internet, right? So if you are doing some concrete work, if you are finding some good thing, if you are learning something, it's of course it's good. लेकिन जब आप ऐसा करते हैं कि जिसका कुछ फ्रूटफुल हमें उसका कुछ निकले वाला है नहीं, and we are keep watching the the OTT platform, different web series, or maybe sometimes we are used to with the game, playing the games, और कोई ना कोई चीज सोशल मीडिया पे एक्टिव। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे आपका पोटेंशियल जो है वो आपका वेस्ट करती है, आपका टाइम वेस्ट करती है, और आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपका आपके आपके जो क्षमता है वो क्षमता कहीं ना कहीं पे आपकी स्पॉइल होती है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, लेकिन टेक्नोलॉजी को आपका यूज करें ऐसा मत करिए। यू आई एम नॉट सेइंग दैट कि भाई आप ये सारी चीजें ना करें, लेकिन इट शुड बी इन द लिमिट। एवरीथिंग इज गुड इन द लिमिट, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस पिक्चर। नाउ मैं हमेशा ये क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज अ गुड थिंग अबाउट द इंटरनेट, बिकॉज वी ऑल आर यूजिंग इंटरनेट। सो यस, द गुड थिंग और द बेस्ट थिंग ऑफ द इंटरनेट इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, द ग्लोबल नेटवर्क, राइट? सो ग्लोबल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए, वो आप इन द फिंगर प्रिंट आपके पास आपके इंटरनेट से आप कनेक्ट है तो आपको वो मिल जाएगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Nowadays we are communicating on the internet base, right? So again, that if you want to communicate with any corner of the world, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका जो भी कोई है, आप जिसके साथ आप, तो आप यू कैन कम्युनिकेट ऑनलाइन। So this is a really a great part of the internet, and nowadays there are a lot of things are going on the internet, right? So it's a really great, but the same thing, if what is the worst part, जैसे मैंने बताया आगे भी कि everything is good in the limit। So again, that what is the great part again is the worst part, because everything is connected to the global network. Why I am telling this? Because if you observe from the last couple of, I'm not presenting a slide, but in the last decade the cyber crimes related with the cyber crimes are increasing tremendously, means almost it's increasing 500 to 600%, right? And this is really a major concern. So again, here we need to be understand what is the potential of the cyber security with this thing। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे पहले अगर हमें हमारे घर को जाना, बाहर जाना, तो हम घर को लॉक करके जाते थे, राइट? तो वहां पे सिक्योरिटी की जरूरत, हमारी सिक्योरिटी क्या थी, तो ये लॉक था। लेकिन नाउ डेज पीपल आर बेसिकली ऑन द इंटरनेट, आपका मोबाइल कनेक्टेड, आपका बैंक अकाउंट आपके साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि कोई भी बंदा अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपके आपके अकाउंट में, यानी आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में कहीं से भी वो एंटर हो सकता है, इफ यू आर डूइंग समथिंग मिस्टीरियस। So again, that is the worst part, and that's why we need to be understand the cyber security very well. Now, friends, here I am sharing this slide for you. This is a comparison of both, different things which are going on the internet. ये मैंने 2020 से 2021 में किस तरह से लैंडस्केप बदल रहा है, मीन्स व्हाट वी आर डूइंग ऑन द इंटरनेट। नाउ अगेन दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, because with this slide you can understand what is the market size of the internet, what is the potential of the internet। If you see that these activities are only for 30 seconds, whatever exactly going on the internet, ये 30 सेकंड में क्या होता है ये दिखा रहा है। तो if you compare the different platform, you can clearly see that कि फेसबुक यूजर 1.3 मिलियन थे और यहाँ पे 1.3 मिलियन लॉग इन होते हैं एवरी 60 सेकंड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द 60 सेकंड, 1 मिनट। सो यहाँ पे 1.4 मिलियन अभी हो रहे। लिंक्डइन के जो प्रोफाइल थे, तो लिंक्डइन के प्रोफाइल जो है वो भी कंपेयर टू काफी ज्यादा बढ़ गए। 4.7 मिलियन यूट्यूब के जो वीडियोस है, नाउ इज 500 आवर्स इज द व्यूअर एवरी 60 सेकंड। नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। Every platform, if you say that Snapchat, then 2.5 to 3.4 million, these are the activity, these are the messages, snaps, whatever you can say, these are sharing on every 60 seconds, a huge data. So again, that you can just image what is exactly the these all platforms together, what is the size of the internet is very huge, and all those things are running on the data, right? And I really sorry to say that, but India is a highly data consuming country.
So we are consuming a lot of data because we are sharing number of things, goodbye, good morning, good night, all those things also we are sharing number of times. And we need to be understand कि ये जो सारी डेटा है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, वो एक्चुअली कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन दे रहा है। तो ये जो आपको मैसेज भेज रहा है वो कर रहा है, या फिर दूसरा कोई कर रहा है। ऑफ कोर्स दैट ये आपको मैसेज है उसको ही कर रहे हैं। So again that these different companies are working on that and they are creating this data and we are keep sharing the data. So again that is a not good practice because it's time, it is consuming lot of time because every time हमको ये लगता है कि यार इसने मैसेज किया, चलो मुझे भी इसको मैसेज करना चाहिए। नहीं, एवरी टाइम इफ यू आर गोइंग टू, अगर आपके पास 100 दोस्त है या ऐसे कोई 50 लोग है, अलग अलग डिफरेंट है जो अलग ग्रुप में है, so again that you need to be, you keep engaging with the, with the messaging, and it's really spoil your time and potential. So this why this data is important, and this also show what is the market size of this cyber world and the cyber security area. Now, friends, here we need to be understand that what exactly the cyber world is all about, means who own this cyber world. तो कई बार जब मैं ये पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं यार सर कैसे ओन, या ओन का मतलब क्या है, हु ओन, मींस नो वन ओन। But if you see this picture, you can clearly see that few years back, I'm just giving example of, मैं आपको बताता हूँ खाली 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो most of the company of the IT are from the USA. If you just see in the chart that Facebook, Amazon, Microsoft, HP, IBM, Intel, WhatsApp, then Alphabet Inc., this Google, all those countries basically from the USA, right? So again, that this is clearly visible that US rule the internet. But in the last 15 years, or I can say the last decade, the most of the company from the China is basically take over the market. If I am saying about the hardware part, most of the hardware means, अगर मैं बताऊं आपको कि जो पूरा जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर आप स्विचेस आपके हैं, राउटर्स आपके हैं, ये सारी चीजें 90% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर इन द चाइना, बिकॉज वहाँ पे सस्ता भी होता है एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये मार्केट टेक ओवर किसने कर लिया? चाइना ने कर लिया। नाउ मोस्ट ऑफ द फोन्स आर मैन्युफैक्चर इन द चाइना। आपका कोई भी फोन हो तो यहाँ हवाई है, लिनोवो है, JD.com, एलीबाबा है, सायोमी है, ये सारी कंपनियां क्या करती है, ये कंपनी नाउ दे आर टेकिंग विद द हार्डवेयर। लेकिन अगर आपने सुना होगा कि पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने 300 प्लस जितनी एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे चाइना की थी, वो उनको बैन किया गया, उनको रिमूव किया गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि कहीं सारी एप्लीकेशन भी चाइना बनाता है, और 60 से 70% जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो चाइना की है। और अगर हमने 300-400 बैंड की तो उनके पास दूसरे भी सारे एप्लीकेशन है। सो अगेन दैट ये एप्लीकेशन क्या करती है मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। लेकिन व्हाट आई ट्राई टू से दैट दिस बेसिकली मार्केट रूलिंग बाय द टू मेजर कंट्रीज, दिस इज द यूएसए, and the software part was is with the USA, and the hardware part with the China। और चाइना अब क्या कर रहा है, एप्लीकेशन के थ्रू सॉफ्टवेयर पार्ट में भी एंटर हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रियली अ मेजर कंसर्न। नाउ मैं ये क्वेश्चन ऑफलाइन सेशन में हमेशा पूछता हूँ, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, अगर है तो आप अपने आपके जो फेसबुक आप अगर आप देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू बी कमेंट कि डू यू शेयर योर सीक्रेट। जनरली लोग बोलते हैं कि मैं अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करता। आचार्य चाणक्य ने भी ये कहा है कि अगर आप अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, मीन्स आपको खत्म कर सकता है। तो जनरली लोग बोलते हैं कि सर हम लोग अपनी सीक्रेट नहीं शेयर करते, लेकिन यू आर इन द एज ग्रुप कि जहाँ पे ऐसा होता है कि यू आर शेयरिंग योर सीक्रेट विथ योर फ्रेंड्स मे बी, और समटाइम विथ योर मे बी सब टू हुम यू ट्रस्ट, और अपने पेरेंट्स के साथ भी आप शेयर करते होंगे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं भी करते हैं। आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, अगर आप करते तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ समझना क्या है, अगर आपके पास मोस्ट ऑफ द यू आर राइट नाउ अटेंडिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन और मे बी लैपटॉप, लेकिन कहीं लोग लैपटॉप से ज़्यादा मोबाइल फोन में अटेंड कर रहे होते, बिकॉज यू आर एनीवेयर ऑफ द पार्ट, सो इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू अटेंड। ये जो आपका मोबाइल फोन है, आपका मोबाइल फोन में देयर आर नंबर ऑफ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, राइट। तो बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं, और कहीं एप्लीकेशन जो होते हैं जो आप क्या करते हैं, बाहर से इंस्टॉल करते हैं, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी ने बोला यार ये बहुत अच्छी गेम है, चलो आप डाउनलोड कर दे, तो आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। किसी फ्रेंड ने बोला यार ये यूटिलिटी वाली एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर दे, इसमें कुछ ऑफर आ रहा है, इसको डाउनलोड कर दे। तो वी आर कीप इंस्टॉलिंग द डिफरेंट एप्लीकेशन, एंड ऑल दिस एप्लीकेशंस बेसिकली asking certain permission from you।
तो ये क्या परमिशन होती है कि भाई आपका डेटा है, आपका आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपकी आपका आपका इंटरनेट कनेक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपके एसडी कार्ड का डेटा है, आपका माइक्रोफोन है, आपका वेब कैमरा, आपका कैमरा है, या फिर आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं जिसके आप साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सारी डिटेल वो लोग शेयर करने के बोलते हैं। और क्योंकि हमें वो इंस्टॉलेशन करना है, तो वी आर जस्ट गिविंग दी परमिशन टू यस, सो वी आर एग्रीइंग। तो यहाँ पे मैं इसलिए बताता हूँ कि भाई बिकॉज आई एम विद द लीगल पार्ट, तो एक टेक्नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में और डेवलपर के बीच में होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वॉलेंटरली उनको दे रहे हैं, और मे बी दैट पॉसिबल कि वो यहाँ लिखते हैं कि भाई वी आर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद द थर्ड पार्टी। यहाँ पे देखिए आपका मीडिया फाइल भी वो एक्सेस करती है ना, आपके जो वीडियोस है, आपके जो फोटोग्राफ जो आपके फ़ोन में रखे हैं, वो सारे भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ रखी है, मेरा पासवर्ड मैंने रखा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन मैंने वो मोबाइल में रखा है, तो मे बी इट्स गोइंग टू बी, उनको वहाँ पे वो देख सकते हैं। आपका कोई अकाउंट नंबर आपने लिखा हुआ, उसका पासवर्ड या आईडी पासवर्ड लिखा, वो देख सकते हैं। आपने कोई ऐसा फोटोग्राफ है, आपका कोई वीडियो ऐसा है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपने स्टोर करके रखी है, दे आर एबल टू एक्सेस, एंड दिस इज अ रियल कंसर्न। सो अगेन दैट जो हमें फ्री में मिलता है वो कहीं भी फ्री में होता नहीं है। ऑल दिस एप्लीकेशन आर फ्री, बट एवरी देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। में हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपको ये फ्री में देता है, तो देयर आर सम हिडन कॉस्ट। वो हिडन कॉस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे आज समझनी होगी, एंड दैट इज ऑल अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। ये जो मैंने आपको बताया उसका एक बेस भी है। ये रिसेंट सर्वे एक आर्का कंपनी ने किया था, और उन्होंने ये बताया था कि देखिए जो डेटा कलेक्शन एंड्रॉयड एप्लीकेशन करती है, वो जो है वो एक्सेस जो है उसमें लोकेशन को एक्सेस करती है। तो 70% 71% आपके लोकेशन को एक्सेस करती है, 62% जो है वो आपके कैमरा को एक्सेस करती है, 50% एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करती है। तो दीज आर ऑल इंक्रीजिंग कंपेयर टू दी आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर नहीं करता है, बिकॉज दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ उनका वहाँ पे सेटिंग्स रहता है। लेकिन ये इसका एक रीजन ये भी है कि भाई एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, और एंड्रॉयड जो आईफोन की एप्लीकेशन है जो मैक बेस्ड है, इट इज बेसिकली ओन्ड बाय द प्राइवेट कंपनी। तो वो लोग का जो एक प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, कंपेयर टू दैट इट्स सिक्योर, बट देर इज नथिंग लाइक एन एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इन द साइबर वर्ल्ड। कोई भी अगर ये बोले कि भाई मैं अपनी एब्सोल्यूट सिक्योरिटी में प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मैं वी हैव अ कंप्लीटली सिक्योर प्लेटफॉर्म, और so this is a myth. It is not possible in the cyber world. So again, that what actually save you, your best cyber security practice ही आपको बचा सकती है, otherwise you are going to be victimized on the internet. So this is how it's going to be work. Now साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें साइबर वर्ल्ड को समझना होगा कि ये किस तरह से ये चलता है, किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ कोर्स के वेब वर्ल्ड का, लेकिन दिस अगेन इज अ ह्यूज पार्ट, बट अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर। लेकिन जो वेब वर्ल्ड है वो क्या क्या करता है, तो वॉट एवर राइट नाउ यू आर डूइंग, सरफेस वेब इज दैट, इट्स जस्ट 4%। सरफेस वेब का मतलब होता है यहाँ पे एक इंडेक्स डेटा होता है। इंडेक्स डेटा का मतलब होता है कि अगर आप जैसे अपने बुक में, अगर आपने कोई अगर आप देखते हैं कि भाई बुक के अंदर कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, तो यू कैन गो विद द इंडेक्स, वो आपको दिखा देगा। जैसे गूगल पे आपने सोचा कि भाई बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तो आपने ऐसा लिखा, तो जितना साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, तो सूरत लिखा, तो सूरत में शायद आपको नाम मेरा मिलेगा, या फिर कोई ना कोई दूसरा हो या मिलेगा, तो जितने लिस्टेड हो उनका सबका नाम मिलेगा। तो ये जो डेटा है वो गूगल के अंदर इंडेक्स हुआ है, दैट्स व्हाई यू कैन एबल टू फाइंड, आपको कई सारे पेजेस, कई सारी चीजें आपको दिखेगी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द सरफेस। फेसबुक है जो कोई भी यूजर यूज कर सकता है, इसके ऊपर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी वन कैन क्रिएट द अकाउंट, एनी वन कैन यूज दैट। सो दिस इज जस्ट अ 4% ऑफ टोटल इंटरनेट। तो मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड, सर व्हाट इज 96%? तो 96% में से 90 जो परसेंट है वो क्या होता है, 90% जो है इज बेसिकली अ डीप वेब। तो आप जो मैंने बताया कि एक मिनट में कितना डेटा आपका जो आपका यूज कर रहे हैं, आप कितने मैसेज कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओटीटी पे क्या क्या देख रहे हैं, जरा यूट्यूब के ऊपर कितना देख रहे हैं, ये सारी जो चीजें है, तो ये जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा ना। कई लोग बोलते हैं सर क्लाउड में, तो क्लाउड यानी कि आकाश में होता है, नहीं आकाश में नहीं, क्लाउड इज अ वन काइंड ऑफ सर्वर। तो ये जो सर्वर्स है, तो सारी कंपनियां हैं, गूगल है, या फिर फेसबुक है, या फिर व्हाट्सएप है, या फिर एक्स वाई गवर्नमेंट्स कंपनियां हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, फिर कहीं सारे सिक्योरिटी के जो डिफेंस अपने डिफेंस है कंपनियां हैं, बैंकिंग सिस्टम है, ये सारे अपने खुद के सर्वर को मेंटेन करती हैं। दैट इज व्हाट दे आर स्टोरिंग द डेटा, इज अ ह्यूज साइज ऑफ डेटा। सो अगेन दिस इज अ 90, दैट्स व्हाई दिस इज 90%, राइट, इज अ ह्यूज साइज।
और जो लास्ट में आता है, यहाँ पे सारा खेल है, वो है 6% वो है डार्क वेब। ये कई बार आपने सुना होगा, और ये सेशन के बाद मे बी आप में से कई लोग इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे कि यार ये डार्क वेब क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो डार्क वेब इज अ प्लेस विद हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल आर सिटिंग ओवर देयर, बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। लेकिन ये इंटेलिजेंसी का उपयोग अगर आप कोई ऐसे काम में करते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, तो वो इंटेलिजेंसी आपकी काम की नहीं है। और यहाँ पे यही होता है। ये जो प्लेस है, यहाँ पे क्या होता है, सो देर आर द नंबर ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं कई सारे लोग, जो इलीगल अपने जो क्या होता है कि भाई प्यार अपने पान नंबर है, या फिर आपके बैंक की कोई डिटेल्स है, आपके सीवीवी नंबर है, ऐसे कई लोगों को ऊपर से डीप वेब से वो हैक करके यहाँ पे से वो लोग बेचते हैं। ठीक है, तो आपका उसमें सीवीवी नंबर भी आ जाता है, आपका डेबिट का क्रेडिट का नंबर भी आ जाता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको इसमें रिसर्च कहीं सारे मिलते हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट से भरा पड़ा हुआ है, तो दैट इज पीपल आर वॉचिंग। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी को ये बताते हो कि भाई मुझे इसका ये हैक करना है, और आपको कहीं आपको सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना है या कुछ भी हैक करना है, ऐसा कुछ लिखते हो आपको, और आपको कई सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, कई सारे लिंक मिलेंगे, और जब आप उसको इंस्टॉल करते हो, तो फर्स्ट टाइम दैट व्हाट क्या होता है, आप खुद हैक हो जाते हो, राइट। सो मैं आपको सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी ऐसा लिखने के बाद जो एप्लीकेशन आती है उसको लोड मत करिए। इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर गोइंग टू बी विक्टिमाइज्ड, डोंट डू दैट। तो क्या है, तो इसके ऊपर जो अगर किसी को एंटर होना है, तो इसके लिए जो एक ब्राउजर है वो भी एक डिफरेंट ब्राउजर होता है, ये अपने क्रोम से नहीं हो सकते। और इसकी जो करेंसी है, ये बिटकॉइन जैसे मैंने बताई थी, करेंसी ऑफ द डार्क वेब। तो बिटकॉइन ज़्यादा है, अभी तो बहुत सारे कॉइन अभी तो आ गए, और अब लोगों को तो मुझसे ज़्यादा भी पता होगा, क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग विद यू, और मे बी आपने कहीं पे किसी को बोला होगा कि भाई देखते हो कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो पीपल आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी। तो जब तक आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, इसको आप ऐसी कोई करेंसी में डील ना करें, पहली बात। और सेकेंडरी, मैं ये बताना चाहूँगा कि डार्क वेब को अगर एक्सेस करना है, तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं, आप उसको समझते हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, ध्यान एंड ध्यान ओनली यू आर गोइंग टू बी एक्सेस। अगर आप उसको अपनी एक सीमित जानकारी के साथ इसको ऑपरेट करना चाहेंगे, तो इट विल बी एक्चुअली हार्मफुल टू यू। आपका डेटा चला जाएगा, आप खुद हैक हो जाओगे, और इट मे पॉसिबल दैट आपको आप कहीं ना कहीं पे आपका इंफॉर्मेशन, आपकी जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे मिथ है साइबर वर्ल्ड में कि आई एम एब्सोल्युटली सिक्योर, मैं बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस करता हूँ, मुझे सब पता है। मैं अभी रिसेंटली एक बात कर रहा था, बोल रहे सर मुझे पता है किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन देयर आर द नंबर ऑफ थिंग कि ऐसी सारी जानकारी सबके पास होती है, लेकिन प्रैक्टिसेस जब करना होता है, तो वी हैव अ कपल ऑफ हमारे पास कई क्लाइंट होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, कई बार को इंजीनियर्स होते हैं, दे आर द टेक्निकली साउंड बट दे आर विक्टिमाइज। तो यहाँ पे ऐसा है कि मैंने जैसे बताया, देयर इज नथिंग लाइक एन एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। कैसे, तो देखिए मिस्टर जुगरबर्ग को आप देखिए, ही इज एक्चुअली उनके अकाउंट 3 टाइम्स हैक्स हो चुका था, 90 मिलियन अदर यूजर अफेक्टेड सिक्योरिटी ब्रिच। तो इनके पास तो पूरी एक फौज है अपनी सिक्योरिटी की, दे हैव द बेस्ट इनका इनके स्टाफ मेंबर्स है, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन दी R&D। बहुत सारी चीज़ होने के बावजूद भी इनका अकाउंट हैक हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी बंदा हो, उसकी सिक्योरिटी को ब्रिच किया जा सकता है, लेकिन आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप में से कई लोग ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ जो है ये एप्लीकेशन किस तरह से हमारा डेटा मिसयूज करती है, और कई सारे साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज है। तो गूगल जो है वो, चाइनीज पीपल दे आर नॉट यूजिंग गूगल, दे हैव देयर बाइडू एप्लीकेशन, सी, दे हैव देयर ओन बिल्ट अप। तो अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे ट्विटर का अभी जो हमने बनाया कू वर्जन इंडिया ने, तो वैसे ही इनके सारे जो ये जितने भी एप्लीकेशन हैं, इनके अगर इंडियन वर्जन होंगे, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आपको ये सोच के बनाना है कि देखिए चाइनीज लोग बना रहे इतनी सारी चीजें बनाए, तो मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे, कि हाउ दे पीपल आर एक्चुअली, बिकॉज उनको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको डेटा, यानी यूएस की कंपनियां थी, तो उनका डेटा शायद यूएस के जो फेसबुक है, वो फेसबुक वहाँ पे अलाउ नहीं है, वहाँ पे आपका गूगल अलाउ नहीं है, वहाँ पे इंस्टाग्राम अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे यूज़ होती है, वहाँ पे क्यों अलाउ नहीं है, बिकॉज दे आर टेकिंग योर डेटा। और वैसे ही जब आप अभी अपना जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करें, तो आपका भी डेटा कहीं ना कहीं पे
आपका डेटा कहीं ना कहीं पे एक्सपोज हो रहा होगा। दैट्स वाई वी नीड टू बी बिल्ट सच अ हमको ऐसा है कि एक रॉबस्ट, हमको ये सारी चीजें बनानी है इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया बनानी है, जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें मेक इन इंडिया में ये सारे, और ये सारा पोटेंशियल इंडिया में है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, ये मुझे आपको बताना जरूरी है कि यू आर चूजिंग द पाथ, अगर आपने ये पाथ चूज किया कि भाई नहीं, मैं कोई गेम खेलता रहूंगा या फिर मैं सोशल मीडिया पे ये एक्टिवेट रहूंगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैं ये वेब से, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको टेक्नोलॉजी का इनोवेटिव यूज सीखना होगा, आपको बेस्ट साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना होगा, समझना होगा, एंड देन यू कैन डेवलप योर ओन वर्जन। अगर आप ये वर्जन बनाते हैं, डिफेंस सेक्टर में कई सारी अपॉर्चुनिटी है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर वी आर गोइंग टू बी डेवलप। मेरा लास्ट में बताऊंगा कि इंडिया ने क्या क्या किया हुआ है, लेकिन इसके पहले भी आपको ये समझना है कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, तो हम लोग इसको इंडिया में कैसे बिल्टअप करें। ठीक है, तो व्हाट्सएप का यहाँ पे वीचैट का वर्जन है, वहाँ पे यूट्यूब का एक अलग सा वर्जन है यूकू करके, देन अगेन देयर स्पॉटिफाई हम यूज करते हैं, उनका वहाँ पे क्यूक्यू म्यूजिक है, देन अगेन देयर टिंडर जो आपको पता है वो टन टन करके एप्लीकेशन इनका है। तो अगेन दैट इंस्टाग्राम का इनका खुद का वर्जन है। ठीक है, दे आर नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम। और टिकटॉक, जो टिकटॉक तो उन्होंने ही बनाया हुआ था, सो अगेन दैट इज हाउ दे आर, टिकटॉक तो बैंड हो गया, लेकिन फिर भी पीपल आर कि बहुत क्रेजी हो गए थे अपने वीडियो बनाने में, अपने या, और ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे जाके या वीडियो बना के आप रातों रात पॉपुलर हो जाओगे। इफ यू आर बिल्डिंग सच दिस, ये सारी अगर एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो भी आप पॉपुलर हो सकते हो। ठीक है, तो वो जो जो एक अभी जो एक दिमाग में चल रहा है कि नहीं यार मैं रील बनाऊंगा, ये करूंगा, इससे मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, ये लोग बहुत बैठे बैठे कमा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इसके लिए बहुत ही एफर्ट लगाने होते हैं कोई भी फील्ड के अंदर, राइट। और जब आप ऐसी कुछ नई चीजें बनाएंगे तो इसमें दो काम होगा, पॉपुलर तो आप होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो सर्विंग टू द नेशन, आप नेशन का भी सर्व, आप नेशन को भी आप सिक्योर कर रहे हैं। और द थर्ड थिंग इज दैट यहाँ पे जो आप कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। ठीक है, एंड अगेन दैट यू आर एक्चुअली सेट आप ऐसा एक एग्जांपल सेट करोगे जिसके बाद लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये सारे लोग वीडियो जब बनाते हैं, मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है यार अब क्या कर रहे हैं ये लोग, व्हाई दे आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन द मेकिंग द वीडियो, फिर मुंह या फिर वो डायलॉग बना दे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ फन आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट इनोवेटिव अगर यूज करना सीखेंगे तब जाके हम कुछ कंट्रीब्यूट करना कर सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोग अपने एप्लीकेशन बनाते रहेंगे, हम उसको यूज करते हैं, तो वी आर द यूजर ओनली, वी आर नॉट क्रिएटर। सो हमें यूजर बनना है या क्रिएटर बनना है, दैट इज अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो अगेन दैट ब्रांडिंग के लिए देखें तो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव अ चाइनीज फोन। तो मेक इन इंडिया में हम लोग कई सारी चीजें इंडिया में डेवलप करें, मोस्ट ऑफ द फोन वी आर डेवलपिंग, बहुत सारी चाइनीज कंपनियां भी यहाँ बना रही है, बिकॉज वी आर नॉट अलाउिंग देम यहाँ से इम्पोर्ट करना। सैमसंग का एक बहुत बड़ा मार्केट है बिकॉज ऑफ साउथ कोरियन कंपनी। लेकिन अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर कंपनियां है, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, फिर सायोमी है, ये सारी कंपनियां जो है वो कहाँ की है, मोस्ट ऑफ द कंपनी फ्रॉम चाइना। वन प्लस, दे आर ऑल दी, वो नाम चेंज करते रहते हैं ये तो, लेकिन दे आर एक्चुअली वन। सो अगेन दैट हमें अपनी कंपनियों को कैसे आगे ले जाना है ये हमें सीखना, तो ये अल्टीमेटली दे आर टेकिंग अवर डेटा विद देयर फोन्स ऑल्सो। देखिए इनका एक वॉरफेयर स्ट्रेटजी होता है, चाइनीज दे आर कमिंग विद दी विद दी डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर। तो अभी जो वॉर होगा वो नेक्स्ट वॉर कैसे होगा, तो वो पहले लड़ा जाएगा साइबर वर्ल्ड के अंदर, देन आफ्टर फिजिकल वर्ल्ड में। तो पहले मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहूँ कंट्री की, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे डेटा स्टोर है, गवर्नमेंट का डेटा है, बैंकिंग डेटा है, न्यूक्लियर पावर का डेटा है, मेरे मिलिट्री डिफेंस का डेटा है, तो मैं वो वहाँ से निकालना चाहूँगा। तो वो कैसे कैसे कर सकता हूँ, तो अगेन दैट ये क्या करते हैं, ये आपके यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, देखिए आपको मैं इन्वेस्ट तो मैं कर दूंगा आपको, लेकिन आपको ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करनी होगी, राइट। सो अगेन दैट वो एक आपको हेल्प करने के बहाने दे आर टेकिंग योर डेटा, एंड अगेन दैट दे एक्चुअली कंट्रोलिंग योर डेटा। अगर वो डेटा कंट्रोल करते तो बहुत सारी चीजों को वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको पता है। तो दैट इज हाउ दे आर वर्किंग। कई सारी मॉडर्स ऑपरेंडी क्राइम की फ्रेंड्स बदल रही है इंटरनेट वर्ल्ड के ऊपर, फेक गवर्नमेंट वेबसाइट बनती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उसमें दिया। अभी रिसेंटली बहुत सारे फेक लोन एप्लीकेशन चल रहे हैं कि जिससे क्या लोगों को अभी बहुत क्राइसिस थी, तो लोग कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उनको ये बोलते हैं कि चलो आप एक काम करें, पहले इतना पैसा दो, उसके बाद आपको इतना पैसा आएगा। तो अगेन दैट अगर मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो हाउ वाई वाई दे आर डिमांडिंग फर्स्ट मनी। सो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, दैट्स वाई दे आर टेकिंग दिस डेटा। तो मेरा एक आपसे सभी का रिक्वेस्ट भी है, ये सेशन खत्म होने के बाद अगर आप देखते हैं, अगर आपके
और कुछ मत करिए, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो लोग सुरक्षित रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे, और यही हमारा एक मिशन होना चाहिए। फेक वेबसाइट ऑफरिंग गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे जॉब ऑफरिंग के लिए आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर टेकिंग द डेटा। सो फेक जॉब ऑफ कैसे उसको पता करना है मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, क्योंकि जनरली क्वेश्चन सर ऐसा फेक साइट कैसे पता करेंगे, फेक एप्लीकेशन कैसे पता करेंगे, तो दैट इज आई विल शो यू। फिर केवाईसी के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ई सिम अपग्रेडेशन के बारे में फ्रॉड होते हैं, राइट। फिशिंग लिंक, आपको बार बार लिंक आती है गवर्नमेंट का ये ऑफर है, फ्री लैपटॉप है, ये है। तो ऐसी कोई चीज़ों पे आपको क्लिक करना नहीं है। दे आर टेकिंग योर डेटा, और दे आर मिरर योर फोन, आपका फोन को मिरर करके आपके अंदर आपके डेटा के साथ या आपके बैंकिंग डेटा के साथ कोई ना कोई आपके साथ उसमें चीटिंग कर सकता है, राइट। एंड आपके ऑफ कोर्स एट व्हाट्सएप तो बहुत सारे ऐसे लिंक्स फॉरवर्ड होते हैं रोज, कि लोग इसको देखते हैं और वो ग्रुप में डाल देते हैं। कभी भी ऐसा मत करिए। फर्स्ट वेरीफाई द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, कहाँ से इंफॉर्मेशन आई उसको पहले आप आइडेंटिफाई करिए। नहीं पता चल रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी साइट है जहाँ पे आप वहाँ से आपको एक्चुअल सोर्स है वो पता चलेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है। और जब आप कोई भी ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं तो आप तो विक्टिम बनते हैं, बाकी आप क्राइम को अबेट कर रहे हैं, यानी कि आप दूसरों को भी विक्टिम बना रहे हैं। सो डोंट शेयर सच इन्फॉर्मेशन, राइट। और एक्सटॉर्शन यूजिंग एडिटेड पॉर्न वीडियो, बहुत सारी अभी ऐसा है कि बहुत यंग बच्चे आते हैं, उनका कहीं ना कहीं पे वो कुछ पॉर्न वीडियो देखते हो, उनकी साइड का उनका बेसिकली उनका ऐसा वीडियो जो मॉर्फ करके बनाया जाता है, और मे बी दैट अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको फेसबुक पे या कहीं लोगों के आते हैं, कहीं लड़कियों के आते हैं, आपको लगता है यार ये लड़की मुझे ऑफर कर रही है फ्रेंडशिप के लिए, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, और क्या होता है वो लड़की तो होती नहीं है, एक्चुअली वो लड़का ही होता है। और व्हाट दिस इज ट्रैप, तो वो क्या करते हैं आपको अलग अलग वीडियो दिखाते हैं, आपके साथ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, और क्या करते हैं दे आर रिकॉर्डेड योर एंटायर थिंग। तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग, वो फिर आपको धमकी देते हैं, नहीं आप अगर ये नहीं करोगे तो मैं आपका जितने कॉन्टेक्ट है सबको ये वीडियो भेज दूंगा। ये मॉर्फ भी वीडियो होता है और ओरिजिनल भी होता है। तो वो बच्चा बेचारा घबरा के कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आए जहाँ पे दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, और फिर भी वो लोग तो शेयर करना तो करेंगे ही, बराबर है। तो अगेन दैट डोंट डू ऑल दिस थिंग। एक्सटोर्शन का एक नया एक अभी अवतार आया है जिसे सेक्सटोर्शन, और इसमें कई सारे बच्चे भी अभी विक्टिम हो रहे हैं, यूथ विक्टिम हो रहे हैं, विच इज अप टू दी 10th 11th 12th up to college. So that is how you need to be take care. दो नो वन इज डेयर टू चीट मी, ये एक मिथ है साइबर वर्ल्ड में कि यार मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। देखिए ये मिस्टर केजरीवाल जो अभी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, तो उनकी बेटी जो है वो OLX पे कुछ बेचना चाहती थी, तो अगेन दैट सी लॉस 34,000। क्यूआर कोड उनको भेजा गया, क्यूआर कोड से पैसा उनको बोला कभी क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो आपके खाते में यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। देखिए कभी भी क्यूआर कोड से पैसा आता नहीं है, पैसा जाता है, ये आपको समझना होगा। क्यूआर कोड कैसे काम करता है वो भी समझना होगा। अगेन दिस इज साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अगेन सी लॉस्ट अगेन, तो चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं से रिकवर उन्होंने बाद में कर लिए, ऐसा न्यूज है। लेकिन हाउ दिस विक्टिमाइज, ऐसे तो कई सारे फ्रॉड देश में अभी हो रहे हैं। सो अगेन दैट वी नीड टू बी एजुकेट, हमारे पास अगर ये नॉलेज होगा तो देन एंड देन ओनली वी कैन अवेयर द पीपल, राइट। देखिए अभी थोड़े देर टाइम पहले एक वैलेंटाइन डे में भी बहुत ऑफर चल रहा था। लोगों को ये लगता है कि यार मैं अपने जो है फ्रेंड को ये कुछ गिफ्ट दूँ जनरली, तो 7 नाइट्स का एक पैकेज ताज ने ऑफर किया था। यहाँ पे आप देखिए कि एक लिंक नीचे दिया गया है, तो पहले ताज होटल का तो बराबर वेबसाइट है, लेकिन नीचे जो लिंक है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये हाइपर लिंक है, और वहाँ पे जाके आप जाओगे तो आपके पास वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा। तो आप यहाँ पे आपको लगेगा यार 200 लोगों को मैं से कहा मेरा चांस लग जाएगा तो ये मुझे फ्री मिल जाएगा, मैं अपने मम्मी पापा को दे दूंगा, या फिर मैं कभी ना किसी को मैं दे दूंगा, इसको बेच दूंगा। तो लोग इसमें आके अपनी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं और उनको लगता है कि यार मेरा, ये कभी भी ऐसे जो है वो कहीं भी हमारा ऐसा कोई गिफ्ट विफ्ट लगता नहीं है, इतना समझ लीजिए। और इंटरनेट के ऊपर तो ऐसी सारी गिफ्ट में बिल्कुल भी ना पड़े, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। तो अगेन दैट यहाँ पे भी क्या होता है, दे आर टेकिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और कई बार इसके अंदर आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी मांग लेते हैं, और पीपल आर गिविंग बिकॉज उनको लगता है कि मेरा नंबर लग जाएगा, लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, टीम होने में लगेगा, ठीक है, ये उसके अंदर नहीं लगेगा। सो वी नीड टू बी कंसिडर दिस पार्ट। सो साइबर क्राइम क्या है फ्रेंड्स, ये एक अनलॉफुल एक्ट है जहाँ पे आपका मोबाइल है नाउ इट्स as good as your computer, so maybe your phone is or maybe your laptop or any device or your, अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, होम पीसी यूज कर रहे हैं, पर्सनल डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, अगेन दैट इज अ टूल, टारगेट और बोथ। सो जैसे मैंने बताया कि क्या 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 क्राइम्स कैसे होते हैं, तो जनरली
बेसिकली द सोशल नेटवर्किंग, फेक प्रोफाइल, साइबर स्टॉकिंग, एक्सट्रोशन, थेफ्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है ये कहीं ना कहीं पे आपको विक्टिम बना देगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू, मैंने ये डिस्कस किया हुआ है तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। कैसे विक्टिम होते हैं? बिकॉज आप साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस आपको पता नहीं, आप पॉलिसी को पढ़ते नहीं, और पढ़ते तो भी समझ में नहीं आता है। पर्सनल डिटेल बहुत सारे सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं हम शेयर करते हैं, टॉकिंग दैट यू आर विक्टिमाइज। ओवर ट्रस्टिंग, कोई बोलता है तो हम मान लेते हैं ये अच्छा ये गेम डाल दो, अगर एवरीथिंग इज, वो एक गेम डालोगे तो गेम के साथ कोई ना कोई तो वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आने वाला ही है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ले जाएगा, ठीक है। सो अगेन दिस आर द थिंग। ये एक चीज़ है जो बहुत फेमस हुई थी, थ्री इडियट्स का एक चतुर का जो सीन था। तो यहाँ पे मैं ये सीन इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये सीन जो है उसके पीछे पहले एक स्क्रिप्ट को जैसे रेंचो ने बदल दिया था। तो ये जो स्क्रिप्ट बदल दी गई थी, तो इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं कि आपने एडिट किया किसी को, तो कंप्यूटर सोर्स को आपने एडिट किया हुआ, या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको एडिट किया हुआ, डिलीट किया और एडिट किया। तो इफ़ यू आर डूइंग सर्टन थिंग, आप किसी के फ़ोन में या किसी के लैपटॉप में पर्सनल में विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप अनऑथोराइजली इसको एक्सेस करते, कुछ डिलीट करते, कुछ एडिट करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड इज कंसिडर एज अ क्राइम। और यहाँ पे आपको पेनल्टी हो सकती है सेक्शन 43 के अंदर 2 लाख 5 लाख की पेनल्टी होती है, कम से कम फिर 3 साल तक की जेल हो सकती है। और डॉक्यूमेंट एडिट अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये सारे सेक्शन भी लगते हैं। सो कैन स्पॉइल योर कैरियर, सो डू डोंट डू दैट, राइट, केयरफुल अबाउट इट, राइट। साइबर स्टॉकिंग, किसी को मैसेजेस कंटिन्यूसली करना, भेजते रहना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको केयर करना है, किसी को भी आप हैरेस ना करें, ठीक है। देन ये फेक सारे जॉब ऑफर बहुत आते हैं, तो अगेन दैट डोंट ट्रस्ट ऑन द, आपको कोई किसी ने लिंक भेजा, मेल भेजा, उसके ऊपर विश्वास ना करिए। कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके टैली करिए कि भाई एक्चुअली ये रिक्रूटमेंट है या नहीं है। अगर आपको ये एक बिटली लिंक आता है और लिंक आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्चुअली लिंक ये बड़े ग्रुप का है कि नहीं, तो ये आपको मैं टूल दे रहा हूँ, इज़ अ वेरी गुड टूल, urlx.org। तो वो बिटली लिंक को आप यहाँ पे अपने पेस्ट कर देंगे, तो आपको एक्सपांड करेंगे तो आपको जो ओरिजिनल लिंक है वो पता चल जाएगा। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं करना है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, इट्स अ वेरी गुड टूल। जैसे मैंने बताया जॉब फेक, और ये एक नई टेक्नोलॉजी है डीप फेक। तो आप किसी भी चेहरे पे किसी का भी चेहरा आप लगा के उसके जैसा बोल सकते हैं, किसी को भी आप ऐसे दिख सकते हैं। तो आप कई बार ये कार्टून्स में देखते होंगे, तो ये लोग ये डीप फेक को यूज़ करते हैं अल्टीमेटली। तो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये मशीन लर्निंग के ऊपर काम करता है, राइट। तो अगेन दैट दिस इज अगेन अ न्यू काइंड ऑफ क्राइम, और ऐसे कई सारे क्राइम फ्यूचर में बढ़ेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस धीरे दिन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। डेटिंग के बहुत सारे वेबसाइट आते हैं, बहुत सारे डेटिंग स्कैम होते हैं, सेक्सटोशन तो मैंने आपको बता दिया। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपके जो है वो जुड़ी होती है आपकी ईमेल के साथ। मीन्स अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट बनाए तो भी ईमेल चाहिए, अपना बैंक के साथ जोड़ तो भी ईमेल चाहिए, अगर आप पर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे कॉलेज के साथ कहीं पे तो आपको ईमेल सबसे ज़्यादा चाहिए। तो ईमेल में हम लोग जो पासवर्ड रखते हैं वो जनरली अपने नाम या फिर सरनेम या फिर अपने फ्रेंड का नेम या फादर का नेम या अपने मोबाइल नंबर, बर्थ डेट, या फिर अपने अपने बाइक या कार का नंबर, ये सारी जो जनरल है वो रखते हैं। तो वो बहुत इजीली हैक होता है और इससे सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो सकता है। सो डोंट डू दैट, जस्ट यूज अ पासवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर लोअर केस अल्फा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन। और पासवर्ड का मतलब है कि आई लव टू प्ले क्रिकेट, तो आई का मतलब है 1, एल का मतलब है मैंने कैपिटल किया, ओ को मैंने जीरो किया, वी को मैंने बड़ा कर दिया, तो ये सारे, और ए को मैंने अल्फा अपना एट द रेट में ले लिया। तो वैसे अगर कोई लाइन मुझे अच्छी लगती है, अगर मैं उस तरह से करूंगा तो इट इज़ वेरी हार्ड टू गेस, और वो काफ़ी काफ़ी सिक्योर होगा। तो 12 to 15 मिनिमम कैरेक्टर का अगर आपका पासवर्ड होगा तो वो से ये जो साइड है आपको ये बताएगी कि आपका ईमेल अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था। अगर रेड में आता है तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, ग्रीन में आता है तो सिक्योर है। लेकिन अब ग्रीन में भी है फिर भी आपको अपने पासवर्ड को एवरी 3 मंथ और 6 मंथ में चेंज करते रहना होगा। तो क्या, एटलीस्ट वो कोई ना कोई आपका मिसयूज ना कर सके, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड। मत कर फॉरवर्ड, बहुत लोग फॉरवर्ड मैसेज करते हैं और कई सारी गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। सो मैंने जैसे बताया, इफ यू आर डूइंग सच थिंग तो यू आर अबेटिंग द क्राइम, डोंट डू दैट। पहले सोर्स को पता करें। पीएम केयर फंड के अंदर ऐसा ही हुआ था, जो कि ओरिजिनल पीएम केयर @SBI था। लेकिन क्या कर रहे थे लोग, कई सारे ऐसे पीएम, ऐसे कई सारे फेक यूपीआई आईडी क्रिएट किए गए और लोगों ने वो उसको अंदर पैसा डाल दिया। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो अगेन दैट पीआईबी फैक्ट चेक करके एक साइड है यहाँ पे गवर्नमेंट की, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये फेसबुक के ऊपर पेज भी है। सेम आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के साथ था, एक एप्लीकेशन जो कि पाकिस्तान यूके से रूट हुई थी,
और ये एपीके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई थी। तो व्हाट्सएप के माध्यम से कोई अगर आपको एप्लीकेशन भेज रहा है, डोंट यूज इट। आप प्ले स्टोर में जाए बाकायदा और एप्पल स्टोर में जाए, वहां से ही लोड करें। अदरवाइज देखिए, आरोग्य सेतु का नंबर नाम था, उसमें डबल ए थे, इसमें खाली सिंगल ए है। तो ऐसे सही एपीके निकलते हैं जिससे भी। तो साइबर सिक्योरिटी दोनों चीज लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जानते होंगे तभी जाके आप उसका कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे। हम लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, क्या करते हैं, जैसे हमको एक ऑक्सीमीटर के लिए हमको एक क्या था, एक डिवाइस लेना था जो 800 से 500 के लेकर 800 1000 तक का आता था। लेकिन हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाल दिया और एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे थे। एप्लीकेशन के थ्रू करने में बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपके फिंगरप्रिंट और आपके कई पर्सनल डिटेल ले ली। डोंट डू दैट। बहुत सारे ऐसा ऑफर आते हैं, एक थाली पे दो थाली फ्री, और अगेन दैट पीपल आर लूजिंग देयर मनी। ऐसे कभी भी ऑफर आए तो कभी भी इसके ऊपर क्लिक ना करें और सिक्योर रहे। और पिज़्ज़ा कितने साल में, क्योंकि डोमिनोज का खुद का वेब सर्वर हैक हो गया था, तो बहुत सारी ऐसी डिटेल थी जिसमें क्रेडिट कार्ड थे, ईमेल आईडी थी, डेबिट कार्ड डिटेल थी, और अपने एड्रेस थे, फ़ोन नंबर थे, सारी डिटेल लीक हो गई थी। सो अगेन दैट इफ़ यू आर यूजिंग डोमिनोज, जस्ट चेक इट आउट, और अगर है तो आप उसको बदल दीजिए। और खास करके देखिए, ये जो सर्वर मैंने बताया ना, जैसे डीप वेब, तो डीप वेब के अंदर ये सारे सर्वर होते, तो वहां पे अटैक करके वहां से डेटा ले गया। तो डोंट स्टोर योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑन एनी पोर्टल। आप जहाँ पे भी, अगर आप अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या कोई भी जगह है, वहां पे अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल को स्टोर ना करें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डालना पड़ेगा तो आप डाल दीजिए, लेकिन उसको स्टोर ना करें। अगर वो हैक होता है तो एवरी डिटेल इज गोइंग टू बी, उनके पास वो सारी आ जाती है। कई सारी ऐसी गलतफहमियां फैलाई जाती है, पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा देखी हमने। तो अगर व्हाट्सएप के दो लिंक हो गए तो उसमें गवर्नमेंट आपके मैसेज पढ़ रही है, या उसको डबल देखो तीसरा हुआ तो इसमें आपके आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो अगेन दैट इज नथिंग ट्रू दैट। अगेन ये ऐसे बाकायदा ऐसे पेपर में लगा के रखते हैं, ऐसे ऐसे भेजते हैं ना, किसी को लगता है ये किसी ने ये बराबर ये पेपर में आया था और किसी ने इसका फोटो भेजा, लेकिन ऐसी इमेज क्रिएट करके इसको सर्कुलेट किया जाता है। सो डोंट बिलीव ऑन दैट। इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने भी बोला था कि दिस इज अ फेक थिंग, राइट। फेक चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है यहाँ पे। स्नॉप्स है, पॉलिटिकल फैक्ट है, फैक्ट चेक ORG है, अल्ट न्यूज़ है। ये सारी चीज़ों के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, और तभी आप फॉरवर्ड करें। PIB फैक्ट चेक मैंने ऑलरेडी बताया, एक नंबर भी मैंने दिया हुआ है। अगर किसी इमेज को चेक करना है, ये तो मैंने टेक्स्ट के बारे में बात की है, तो इमेज को चेक करना है तो देर इज रिवर्स इमेज गूगल के ऊपर आती है। एंड एक फाइंड एग्जिट करके एक साइट है जहाँ पे भी आप जाके इमेज, कई बार मॉर्फ इमेज आती है, कई बार पुरानी इमेज को नई इमेज की तरह दिखाया जाता है, कई बार वीडियो को एडिट करके दिखाया जाता है पुराने वीडियो को, और ऐसे फैलाया जाता है कि नहीं, ये यहाँ पे ये धमाल हो गया, ये दंगल हो गया। तो लोग उसको क्या कहते हैं, प्रोवोक करते हैं लोग को इस तरह से। सो पहले ऑथेंटिक है कि नहीं वो चेक करें, तब जाके वो चीज़ों को दूसरी जगह शेयर करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफर आएंगे आपको कि 2000 रुपये में आपको आईफोन मिलेगा, लेकिन डोंट बिलीव इट दैट, कहीं पे भी नहीं मिलता है, और पीपल आर लूजिंग। वी हैव अ नंबर ऑफ सच केसेस जहाँ पे लोग विक्टिम बनते हैं। बेचारे सोनू सूद बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनके नाम पे भी कई सारे फेक ऐसे डोनेशन कैंपेन चलने लगे, और पीपल आर एक्चुअली यूजिंग हिज नेम, राइट। ही इज डूइंग मार्वलस जॉब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पेंडेमिक में, हम लोगों ने देखा। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा वायरल होती है उसका मिसयूज भी इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा होता है, तो हमें ये आज समझना होगा उसको, बराबर है। सेकेंडरी है कि क्या क्या हमारे पास सेफ्टी मेजर है, तो ये सारे जो लॉज है वो आपको कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प करेंगे। साइबर सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं साइबर सेफ्टी का, तो ये चेकलिस्ट है, अपने डेटा को बैकअप करते रहे हमेशा। देन अपने जो पासवर्ड है उसको आप चेंज करते रहे, अपने जो होम नेटवर्क है उसका, जो आपका राउटर उसके पासवर्ड जो डिफॉल्ट उसको चेंज कर दीजिए। सोशल मीडिया प्रोफाइल जो पासवर्ड है उसको भी आप 3-6 महीने बदलते रहे अपने, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर जो है जो उसको अपडेट करते रहे, खास करके पास, ठीक है। और अपने जो प्राइवेसी सेटिंग्स है, यानी कोई भी सोशल मीडिया वहाँ पे भी, तो प्राइवेसी सेटिंग्स के ऊपर भी कौन आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, वो सारी चीज़ों को आप समझ ले, तो आपको जिसको दिखाना उसको ही दिखा सकते हैं, बाकी लोगों को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। और आपके जो डिवाइस है इन्फॉर्मेशन उसके साथ भी आप देख लीजिए कि भाई आपका डिवाइस कहीं से एक्सेस तो नहीं हुआ ना, तो आपको लास्ट में फेसबुक सही सब जगह पे दिखता है कि भाई लास्ट में कहाँ कहाँ से ये हो रहा है, ठीक है। तो आपका एक्सेस कहाँ से डिवाइस हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू नीड टू बी कीप इन माइंड। और अवॉइड ओपनिंग डिलीट सस्पिशियस ईमेल। तो बहुत सारे ईमेल आते हैं जहाँ पे लिंक होती है और मैसेजेस भी आते हैं, वो लिंक सस्पिशियस लिंक है, उनको आप फॉरवर्ड या उसके ऊपर क्लिक ना करें। तो अगेन दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्री आईफोन होगा या फ्री लैपटॉप, मैं लिंक पे क्लिक करेगा नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई यू नीड टू बी कीप
अगर मुझे करना है तो मैं ऑथेंटिक वे से करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट सपोज इफ आई एम डूइंग दैट आई एम गोइंग टू बी विक्टिमाइज। फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है टू टैकल दिस साइबर क्राइम, सो अगेन दैट इज सम ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव्स। सो इट्स एक्चुअली हेल्पफुल यू। मैं आपको दो तीन साइड बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंशियल क्राइम, अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है, विक्टिम बनते हो, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट सम साइबर लॉ एक्सपर्ट। यू कैन ऑलवेज कम गो टू दी साइबर पुलिस स्टेशन इन योर एरिया, लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ पे वहाँ पे क्राइम कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं। गुजरात के लिए साइबर अस्वस्थ हेल्पलाइन थी 100 112 नंबर। जनरली अभी ये इतनी ऑपरेटेड हो, लेकिन अब जो नई लॉन्च हुई है 1930, यहाँ पे जाके अपना आप अगर आप विक्टिम है तो यू कैन फाइल द कंप्लेंट। और एक जो पोर्टल है गवर्नमेंट का cybercrime.gov.in, जहाँ पे जाके भी आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड देयर इज वेरी गुड अनदर इनिशिएटिव, अगर आप इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको कुछ ना कुछ करना है तो आपके पास एक पोर्टल है जो मैंने अभी बताया साइबर क्राइम, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। देन कोई गवर्नमेंट वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपको, ठीक है, ये आपका रोल कहाँ पे एक्सपांड हो रहा है साइबर सिक्योरिटी का। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ें गवर्नमेंट वेबसाइट पे लूप फॉल है उनकी वेबसाइट बनाने में, कोई कोई एंटर हो सकता है या हैक हो सकती है, एप्लीकेशन में कोई लूप फॉल है, अगर आप गवर्नमेंट को आप अगर ये बात बताते हैं तो गवर्नमेंट अप्रिशिएट यू, अगर आप उनको, और साथ में वो आपको एनकरेज भी करेगी और आपको कुछ ना कुछ हिसाब से आपको कोई ना कोई एक रिवॉर्ड भी आपको वो देगी। सो अगेन इट्स द रियली गुड, यू कैन एसोसिएट विद द गवर्नमेंट एंड यू कैन डू योर जॉब। सो अगेन दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी ऐसे लूप फॉल दिखाया तो आपको गवर्नमेंट हायर भी कर सकती है इमीडिएटली। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ये कंप्लीट कर लिया कोर्स तभी होगा। एटलीस्ट इफ यू आर टेक्निकली साउंड, इफ यू आर डूइंग योर गुड जॉब, तो यू विल बी हायर। हाउ टू क्लीन बोटनेट, तो ये गवर्नमेंट ने बनाया था दूसरा एक साइबर स्वच्छता केंद्र है, जहाँ पे कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप उसको अपने नेटवर्क, अपने जो मोबाइल है उसको क्लीन कर सकते हैं, मालवेयर को क्लीन कर सकते हैं। आई डोंट नो राइट नाउ कि कितना इफेक्टिव हो रहा है, लेकिन या दे आर लिस्टेड ओवर देयर एंड बट यू कैन यूज दैट, इज रियली गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। So this is my last slide, and I really appreciate the entire team of the RNG Patel Institute of Technology who invited me for this session, and I really appreciate all of you who are attending right now this session. My dear friend, this is my last word. With only one song, a movement become alive. With only one tree, forests will start growing. With only one smile, friendship begin. With only one word, goal is decided. With only one word, nation will change. With only one step, journey begins. With only one word, prayer is begin. Only one person can change the world, and this is you, my dear friend. That is you. So again, that it is up to you that how can you choose your career. This is a great part of the about this technology that you can always going to be explore. और ये सारी चीजें जब आप करेंगे, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज अटैच्ड, अभी तो क्लोथ भी स्मार्ट आने लगे, टीवी भी स्मार्ट आ रहा है, सब स्मार्ट आ रहा है। So again, that is a great opportunity the cyber security field in the future. So I hope and I wish कि जो अब आज ये इनिशिएटिव, ये बूट कैंप के द्वारा जो आप कॉलेज ने लिया हुआ है, तो ये इट इज़ रियली हेल्पफुल टू यू। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को अटेंड करने में एक आपका विजन क्रिएट होगा और आप अपनी बेस्ट कैरियर को आप चूज कर सकते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर। आई एम कंक्लूडिंग माय सेशन ओवर हियर। सो ओवर टू Vivek bhai, you can take the charge of this further. Thank you So very please. much, sir, for the very helpful and important information to the students. Sir, there is one thing that I wish to discuss with you. That is regarding we might be you might be aware that the admission process is completely online, and at the time of login, the OTP is mandatory. So, what advice you wish to convey to students? What kind of precautions they should keep? Because we have heard the many cases where someone has tried to log into some of the students and they tried to do some mischief and this kind of things. So, Yeah, typical it's process really. is along with login credential, they need to enter OTP, and without OTP, portal will not allow student to do some activities inside this portal. Please, sir, enlighten us with that. Yes, Vivek is really very important because मैं कहीं कॉलेजेस के ऊपर एक कॉलेज से हमें ये रिक्वेस्ट आते हैं कि सर जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार नो दे आर वेरी इनोसेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको वो ट्राई करने में उनको लगता है चलो ये ऐसा कुछ करे। लेकिन मैंने जैसे बताया, एक एग्जांपल मैंने दिया जो रैंचो का, थ्री इडियट्स का,
कि अगर आप ऐसा कुछ ट्राई भी करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी कंसिडर क्राइम, ये बहुत सीरियस। अगर आप अनऑथोराइज, इसका मतलब ये होता है कि अगर अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो इट इज अनऑथोराइज एक्सेस। और अनऑथोराइज एक्सेस करने से क्या होता है, इफ यू आर टेकिंग सम स्मार्टफोन, अगर आप फोन को भी एक्सेस करते हैं विदाउट नॉलेज, अगर आप बाजू में आपने फोन ले लिया तो भी अनऑथोराइज एक्सेस होता है। अगर उसका आपने पासवर्ड डाला या आपने अपने साइन कुछ डाला, एनीथिंग यू आर डूइंग इज अनऑथोराइज एक्सेस। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती है, इट्स अ 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 3 साल की उसमें जेल की प्रावधान है एज पर दी IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और अगेन दैट उसमें पनिशमेंट भी है अप टू द 2 लाख रुपीज। सो अगेन इट्स रियली वेरी क्रूशियल। तो मेरी ये सजे सभी जो हमारे बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप मे बी आप ये नादानी में या फिर आप किसी को परेशान करने में या फिर एक मस्ती के कारण अगर कुछ भी आप करते हैं, लेकिन यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे आपके कैरियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकती है, क्योंकि एक छोटी गलती से आपका कैरियर पूरा स्पॉइल हो सकता है। और अगेन दैट अगर अगर कॉलेज ने या फिर उनको अगर ऐसा कुछ आपको लिस्टेड कर दिया या फिर तो अल्टीमेटली दैट फ्यूचर में आपके लिए कोई भी दरवाजे आपके पास खुले नहीं रहेंगे। सो अगेन दैट आई रियली रिक्वेस्ट एंड आई रियली वांट टू शेयर दिस थिंग कि आप जब भी आप कभी भी किसी का OTP है या किसी का मोबाइल है या लैपटॉप है, उसकी परमिशन के बिना आप उसको एक्सेस ना करें। अगर आप करते हैं तो यू आर कमिटेड क्राइम, नोइंगली अननोइंग, और क्राइम टू क्राइम होता है। देखिए अगर मैं जाता हूँ रोड से और अगर वहां पर रेड लाइट है और मैं बोलता हूँ सर ये रेड लाइट का मतलब है खड़ा रहना, मुझे पता नहीं, और मैं अगर रोड चला गया, तो दैट पुलिस इज गोइंग टू बी पनिश यू। तो आपका जो चार्ज होगा आपको पे करना होगा। आप बोलेंगे सर मुझे पता नहीं है कि रेड लाइट तो है तो बंद करना है। तो एक हमारे में कहावत होती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। तो अगर आप इग्नोरेंस रखेंगे कि मुझे तो पता नहीं था, तो ऐसा आपका एक्सक्यूज चलेगा नहीं। यू नीड टू बी पनिश, यू नीड टू बी आपको ये जानना भी होगा। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो कॉलेज ने बनाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलेज ने जो फ्रेम किए, वो आप पहले समझ लीजिए। अगर कोई भी चीज अगर आप वायोलेट करेंगे तो अल्टीमेटली दैट दो चीजें आपके इफेक्ट होगी, आपके कैरियर को भी इफेक्ट होगा, और सेकंडली आपको कहीं ना कहीं पे सीरियस पनिशमेंट भी हो सकता है। So this is what my answer, Vivek bhai. Over to you. Yes, yes. Thank you, sir. So on this, I wish to add that student, please, you too do not share your user credentials to Yes, any, don't share. yeah, any third party or a third authority. Even for whole overall admission process, just try to avoid visiting cyber cafe. ACPC has set up help center to many engineering institutions. So these are the authorized health center, so just try to visit only to the help center at the time of admission procedure. So And you thank can you very always much. you can Yes, always ask to the authority for that. So that is very important that उनके साथ आप बात करने के बाद ही, अदरवाइज यू आर डूइंग, अगर आपके नाम पे किसी ने कर लिया तो भी वो आपके नाम पे जाएगा, तो इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू यू। सो right, दैट right, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। right. So So thank you sir, very much once again, yeah, Vivek bhai sure, and sure. entire team, and Jai Hind, Vande Mataram. Thank Jai you. Hind, sir. Dhanyavad. Thank you very much, sir, for your time. Thank you, sir. So Can dear I leave? student, yeah, yes, sir, you can leave, sir. So, dear students, it was a seminar or a session on cybersecurity by Dr. Chintan Pathak. Now, our second, let's move towards our second session. And for second session, we have with us Mr. Nirmal Chodwadia. So, I heartily welcome you, Nirmal, after I think the span of 2 years. Right. So I wish to introduce Nirmal. So Nirmal is the prestigious alumni of Computer Science and Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology. So Nirmal has excellent skill in the field of full stack cloud engineer, and currently Nirmal is working with Amazon Web Service, Bangalore, Karnataka, as a cloud support associate. He has a wide experience in the field of cloud technologies and big data technologies. He has acquired impulse of AWS cloud certifications. So, on behalf of CSE RNGPIT, I once again heartily welcome Nirmal and Thank you, sir. express my gratitudes and thanks for sparing a time from your busy schedule. Now I request Nirmal to please enlighten us with the basic skill and basic terminologies of cloud and importance of cloud. Nirmal, actually, the our participants are the students who have appeared for 12th examination.
So I request you to please guide them about the future opportunities of cloud technologies, because they are going to be graduate during 2024-25. Right. Over to you. Thanks. Yeah, thank you so much, Vivek sir and college, for inviting me. And let me share my screen. Yeah, sure. Yes, Nirmal, your screen is visible. You can mix up your language along with English. You can have Hindi and some portion. You can mix Hindi, Gujarati, both, because few participants are from Maharashtra also. Okay, sure, sure. Sure. Yeah, I will do. You can move on. Yeah. So, hello everyone. Thank you so much, Vivek sir, for kind introduction. So, I am Nirmal. I am 2x AWS certified. Currently working at AWS in CSA Big Data team. So today we will discuss about like applications of cloud, what is cloud, how you can learn the cloud, and all the like jargons and basic terminologies. So you can move ahead, and if you want to build a career in the cloud, how you can do it. So before I start, I wanted to start with this quote. I recently started reading about atomic habits and like kind of become fan of James Clear. So like all big things come from a small beginning, and the seed of every habit is a single and tiny decision. So like the reason why I put this, because you never know like where you are starting, like your single or tiny decisions can lead to your bad habit or a good habit. So yeah, so with that, let's move to the next slide. Yeah, so today we will discuss about various topics like what is cloud, what are some of the different cloud service provider, why we need to learn cloud, from where we can learn cloud, and like what are different kind of certifications, what are some of the job opportunities, and if you have some time, we will like share about like we will discuss about some demos and bonus tips as well. So like it's IPL season, and like we all are kind of cricket fans. So from 2022, like if we see the record for the Hotstar, like I know like all of you must be aware of that. It is a streaming platform, and recently the match with between the CSK and RCB was the most watched IPL of 2020, which is having like 82 lakhs of concurrent user on the single platform. So just wanted to wanted to give some brief introduction about like Hotstar. Like Hotstar is basically using the AWS itself behind the scenes. So just look at the numbers, like I mean 82 lakhs people on a single platform concurrently, they are streaming the live matches, and like we are getting entertained by these cricketers as well. So just imagine like how much different types of like workload or how much kind of data centers they need to manage if they are not using the cloud or any kind of AWS or any other cloud provider services. So that will be a very bottleneck, like if you want to scale with the millions of people on your platform, and if you want to scale like in like span of seconds or the span of minutes, then yeah, you need to use like any cloud provider services. Without that, it will be a very hectic, or I can say there are some limitations in the physical data centers if you are building your own. So yeah. So before moving to the cloud, I wanted to discuss about like building blocks of IT resources. So we all know that like IT fundamentals are these three things only, like compute, storage, and network. So any other technologies or new technologies that you will see nowadays or in future, that will be the wrap up within this through these three building blocks. So even if I talk about the cloud, so it is the basically the online renting service of these three resources. So compute, we all, so what I wanted to discuss, what do you mean by compute?
like compute is basically a kind of processor we need for processing our programs and datas, right? So just imagine this resources as your computer. So your computer having any processor, let's say Intel processor or any kind of processor. For the storage we use like magnetic drives or hard drives, right? So why do we need storage? We need storage for storing our programs, to keep our datas within the machines. And network we need for connecting with the other devices, or like become the part of the network. So I guess like we might be all of are aware about like these three building blocks of IT resources. Like any questions so far? Nirmal, you can continue. If I receive any question, I will interrupt you at the same time. Okay, no issues. So yeah, let's start with what is cloud. Basically, so this is the like Morpheus from the Matrix. So like I remember I seen this movie, and like what if I told you that there is no cloud? It's just someone else's computer. So basically, cloud in reality it doesn't exist. So it's simply like it's कोई और का आपका कंप्यूटर ही है जो इंटरनेट पे रेंट पे अवेलेबल है. So that's what it is. Like cloud is nothing like a new concept or something that you are like you need to explicitly learn new things. That is just the way we consume the IT resources that we have previously discussed, like compute, storage and network, which is like some of the cloud providers are giving by renting these resources. So I hope it is the simplest definition of the cloud, like if you can relate with it. So moving further, how companies are, providing this cloud services. So like if according to the Wikipedia, if we look at our typical like definition of cloud computing, so what do we mean by that? So cloud computing is the on demand availability of computer system resources. Like जैसे पहले हमने डिस्कस किया, like cloud कोई नई चीज नहीं है, that is nothing like different. So they are only doing this wrapping of this fundamental IT resources like compute, storage and network. So here I have put this two pictures, like how companies like providing you the cloud resources. So basically all company have this data centers within the globe or across the globe. They have built their data centers, like they are having so much of amount of physical, like we can say servers. Within the servers we all have like typical, these things are like if you relate your computer as a server, that is also like very like layman word. You can say like you can very easily compare with the server as well, because server and the computer doesn't have much differences. Like similar to your computer, server also has the CPU, RAM, IO and disk. So what companies are basically doing, they have created large data centers. Within that they have put this large amount of physical hardwares, and after that, like within that hardware they have kind of operating system, and they have built a software which is called hypervisor. So what they basically do, they create the virtual machine or instance, like in the virtual way. Like you can create like out of, assume this as a one computer, and one computer using this hypervisor you can create multiple small instances. So basically small computer, you can say, with the like limited amount of CPU, RAM, IO and disk. So the way we have talked about the hypervisor, so there are basically two types of hypervisor. So we can say there are two types of software which is cloud company are using to providing this virtual machines or instances, we can say. So like type 1 hypervisor, like these are the bare metal architecture. So companies have put that hardware or physical hardware in their data center. So in that bare metal architecture they just create guest OS, like a guest OS and virtual machine. So this hardware itself not having any kind of operating system. So this hypervisor software directly install on this hardware, and this high
and this hypervisor software which is able to create like small instances virtual machines by guest OS and providing limited resources like RAM, CPU, and all. So in the type 2 architecture, like the different kind of hypervisors are available. So in this second type of hypervisor, we are having like companies having hardware. Within that, they have some sort of host operating system. So that hypervisor software which is being installed on that host operating system, and further it like divides into this small virtual machines. So what are some of the different cloud service providers we have? So we have Amazon Web Services, Google Cloud, Salesforce, Microsoft Azure, Oracle, Alibaba. So these are all the different kind of like service provider. So currently like Amazon having like 70 percentage of market share within the cloud domain. Then the like second number it comes with the Microsoft Azure, and in the third place like Google Cloud is having some market share within this cloud domain. And like Salesforce and other like cloud providers are competing with the different kind of categories within the cloud. So like we have discussed about cloud and computing, so what are some of the different types of cloud providers available and what do you mean by that? So there are basically three types of cloud computing in general. So infrastructure as a service. So like any cloud provider, any public cloud provider, whatever we have discussed in the last slide, most of them are public cloud provider, and they provide infrastructure as a service. So basically AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, these are the public cloud service provider. And so what do we mean by that, like infrastructure as a service? So they are directly giving us all the like within the AWS, like we have account in the social media like LinkedIn, Twitter, or WhatsApp, whatever. So like similarly we have like we need to create one account with the respective cloud provider, and we can just they just giving you all the services listed on that. So we can own our infrastructure, we can build our infrastructure based upon our need. So they are just giving you a plain slat, you can say, and you can build any kind of service or infrastructure that required for your business applications. Moving further, we have platform as a service. So within the platform as a service, this kind of cloud computing, it's basically means that like whatever your business logic or your application, okay, they just provide a platform like Heroku, App Engine, and AWS Beanstalk. So what you need to do, like you just need to upload your program or whatever business logic code that into this any of platform as a service provider, and rest of the infrastructure whatever behind the scenes they need to use, like any services within that, they will automatically created by themselves. So if I want to give example, like let's say I have my blogging website xyz.com, and if I wanted to publish that into any of cloud computing resources, and for example like if I want to use platform as a service, so what I will do, so in the Beanstalk I will just upload my coding files, my source file, and like Beanstalk will automatically take care of all this other services which is required to handle that infrastructure. So this is one layer above the infrastructure as a service. So in the infrastructure as a service, you need to create all the services, whatever you need to use, you need to create this kind of services to host your website. So further we have directly software as a service. So in that we like don't care about anything, not even platform, not even infrastructure, we just directly using this tools direct which is readily available, like Slack and Dropbox and Google Apps. So these kind of things we can say as a software as a service. So these are the three main categories of cloud computing. So like previously I have like talk about public cloud, private cloud, or hybrid cloud. So let's discuss about that as well. So basically public cloud, it means like they have
infrastructure available and the data center they have like created over the world, which can be accessible by any of public, which like by having their respective accounts. So public cloud means they have infrastructure available at their own end, and they are just ready, they are ready to give you like utilizing of that their services. So which means like any like any one of any person can use this public cloud services if they want to. They are not just biased with any of their own cloud services. So private cloud basically means their data centers, and they have also created for themselves only. Like we know that, or I don't know you are aware of that or not, like Facebook having their own private cloud. So they created that infrastructure or that data center for their own personal use. They don't share services like similar to the public cloud service, like service provider. Then we have some hybrid cloud. So in the hybrid cloud basically means that, as the name suggests, like they are having some of the data centers as a public, and some of them are for their personal use. So VMware, Kubernetes is basically Google's project which they have open sourced it. Previously all the Google applications and their infrastructure managed by their uh, program, or you can say like orchestration tool Kubernetes, and then they have released for any of public. They just have open source it, so any public can use it. So similarly AWS outports as well. So what are some of the applications of the cloud? So cloud is basically technology which can use by various of departments, or you can say categories, like art, business, data storage and backup, education, entertainment, management and social. So all of these categories can be like taken care, or this all this category can be utilizing the cloud services one or another way. So if I talk about the art, so within the art you might have heard about like Adobe, or some sort of like editing software, or some sketch software, so which are also under the hood utilizing the cloud one or another way. For the business applications, we have like any kind of this Google Gmail or Google G Suite. So basically they are also business kind of applications. They are utilizing the cloud. Then for the educations, entertainment, for the entertainment we are aware of the streaming services like Hotstar, Netflix and like many more. Then for the social media we have LinkedIn, Twitter, WhatsApp. They also use the cloud in one or another way. So let's discuss about cloud computing, or what are some of the advantages. So like at first place, why we need cloud at first place? So like I wanted to give you one example. like uh, like let's say my company is having different kind of projects, and for that I need to relocate to various cities. Like let's say for example, I for some days, like I need to relocate to Chennai. Then for the other project work I need to relocate to Bangalore, then like South Delhi. Similarly, if my projects like like what I wanted to share is, like if my project is unpredictable, like I don't know like my where will be my next relocation. So this kind of thing is unpredictable, right? So it's better to not to go like if I want to purchase a house, so in which city I will purchasing my house. So whether it could be in Chennai or Delhi or like Bangalore or anywhere. So it's not making any sense, right? Like having multiple like houses in the different cities. So this is very similar to the cloud. So what happens, like for the business logic or for any kind of software company, don't have any predictable capacity that they will be utilizing this much amount of resources. So back then what used to happen, if you want to like host your applications or business proposals, or you can say startup, anything, any applications you can think of. So what they need to use, they
go for like physical hardware, they try to purchase it. And what happens that like physical hardware comes with a lot of maintenance, and you are not sure about your capacity whether it will be utilizing this much amount of resources or not. Sometimes what happens, you need for certain period of time you need more resources, and for certain period of time you don't need any of these resources. So this is the unpredictable traffic, and if you want to utilize it in a very good way, or you can say a very economical way, so that is not making any sense to purchase a physical hardware, like even though you are not sure of whether to invest at first place or not. So that in that with that in mind, cloud comes to rescue. So cloud is basically companies are giving like renting their IT resources, so you can use it like renting your home. Like you don't need to worry about anything, like the amount of time you will use, you will only need to pay for that only. So these are some of the trade off, or like you can say the advantages, like between the like physical hardware or physical cloud, like physical storage and the cloud computing. So trade capital expense for variable expense. So opex model. So basically in the physical hardware, what you need to do, you invest at first place, and then you will decide, like then you will like in the future you will know that whether it is the like correct investment or not. So in the cloud itself, like what they have changed with this model is, like first you will utilize, and based upon the time you will utilizing, on that period of time you just need to pay for that. Then you have like economy of scale. So if you wanted to purchase any physical hardware, so what happens that you can't share it between like any of others, and you need to bear the cost of all the physical hardwares. So with the economies of scale, what it simply means that companies have created that data centers across the globe. Okay, so they can provide you more feasible prices or fair prices as compared to the physical hardware. Then as we discussed, like no capacity planning. So if you are not sure about your traffic or your workload for your applications, then you don't need to guess your capacity, because you can increase based upon the need. Like sometimes you can utilize, like AWS have their auto scaling thing in the elastic compute cloud. So what it simply do, like if your website having like 500 active users, so it will like based upon your parameter you have set, what it basically doing, it will not creating any resources, or all of sudden, like let's say like some kind of sale is going on your website, and the traffic is coming like 2x or 3x or maybe 5x, like 5000 or something. So at that time, if you are not using cloud, or if you are going with the physical hardware, so what you need to be aware of, that you need to pre-install that physical hardware, and you are not sure like once the seal is gone whether it will be useful or not. So you don't need to capacity like planning in the cloud. So in the cloud you just basically provide the parameters, based upon that it will automatically create the resources and delete that resources. Then like faster delivery. So it used to happen for the physical hardwares, you need to wait for like operator to provide you that physical hardwares and maintenance stuff and all. With the cloud, within the span of second you can create the infrastructure. So that's the one of more advantage over there. Then global in minutes. So as we have previously discussed, like you doesn't need to be worry about whether you are just starting out or you have already infrastructure like created. You can go global in like span of minutes as well, with the rapid use of the cloud. So after discussing that, like we need to discuss about why we have to learn cloud. So I'm not sure, like we are already aware of like Avengers Endgame, right? Like we have seen these Marvel movies, like Thanos is telling that I am inevitable. Similarly, so these cloud platforms are also inevitable. So basically it simply means that
directly or indirectly you need to learn the cloud, because companies are adopting the cloud. It doesn't matter if you are like currently not focusing on that, like you currently your job is not providing this opportunity, but if I talk about the future, all the companies are moving towards the cloud or some kind of multi cloud technology. So it's better to start learning whenever you get some time, or just have some mind, or just look at this what I would say, this para gnomes or this kind of companies, like what they are doing, or just try to find some videos around that. So why you need to learn cloud is very basic, like companies are adopting it, either you learn now or you need to learn it later. So that's the one of the reason, like we are here to discuss thing, because like if you start getting interested toward this, any of this, your future will be very bright, I would suggest. Then like just showing some reports for the O'Reilly, like they have did some investigation. So based upon that, 41 percentage of cloud computing resources utilization is more as compared to the last year. So we can see that, sorry, yeah, we can see that this cloud platform are getting adopted by companies, not just like large enterprises or that kind of companies, but even like company who is having one employee or small startups. Like cloud is for every company. It doesn't matter like whether you are large organization or a small. Based upon your use case you can utilize it. And as the report is suggesting, in the upcoming future this adoption will grow more and more. So if you have the right skill, you can have this, you can get this kind of opportunities with the head start. Then I have some resources for you which I will share with sir. So you can, if you want to start with any of, or if you just wanted to learn about getting started how you can start, so I would suggest Andrew Brown and this knowledge India links. So once you start going through this course, you will better understand what it means and how you can learn and all this thing. So yeah, I will share with the sir this resources link, which like this is the resources I have find out within the like what I would say 1.5 years. Like I have myself, I have comprised these resources, and after that I was able to conclude that these are the 5 resources or 6 resources. If you start based upon that, it doesn't matter whether you go with AWS, Azure or Google Cloud. Just start getting through it and start just having some, start spending some time on it. So that will be a very helpful. Then let's talk about certifications. So all the cloud providers, they have certifications. So basically like even if you pass the certification, it's doesn't matter, like you are like it's not something you are a kind of big deal. So certification do not equate to experience, mastery or competence. So basically like even if you certified, right, but if you don't have right skill, you will not getting a job. So certification is can be a good starting point, or you can say you can show some proof of work, but it's not something like if you are certified you know everything. Because right now AWS itself having like more than 200 or 210 plus services, each service is having very in depth as well. So covering with all of the services is not possible. So you can be better at some kind of categories like compute, storage, networking, or this kind of uh, what I would suggest the category specific services. So yeah, just wanted to put some light, like if even there are, so if you are starting with like cloud, what I would suggest, go with some of the basic foundational certificate. So during my time, like while I was in my college, like I have completed this AWS cloud practitioner, which talks about like fundamentals of the services, fundamental of the AWS. So which can help you in a lot many ways. So once you know the fundamentals, you can build entire
like career upon it. So currently I have this AWS cloud certification and solution architect. Next I am planning for AWS data analytics certification, which is a specialty one. So based upon levels, there are various certifications available. AWS itself having their like associate, professional and specialty certification. So if you are starting out, I would recommend starting with AWS cloud practitioner. If you go with the AWS cloud, then like if you want to choose Azure, then you can go for Azure developer or AZ 2900 as well. So these are the fundamental cloud certification which you can go for, like if you are really interested about it. And let me tell you one thing, this all certifications are proctored by these companies itself. Like Microsoft is creating this exam for the Microsoft Azure certification, AWS creating like their certification exam. So there will be the certification fees as well, depends upon the levels of the certification. And with that, it is similar to the IELTS basically. So like you need to pay around 12 to 13k, okay, in the IELTS, or max I would say like 15k. So even if you have paid that amount of money, but if you are not passing the minimum criteria, then you will not get the like certification or band. So be mindful about this certification as well when you book your exam or when you are finally prepared for it. Because like all the certifications having minimum criteria, like out of 1000 you need to score more than 820. So only that you will get this certification, otherwise like you will lose your money. Similarly, we have some GCP, Google Cloud Platform certifications as well. So you can start with any of this Cloud Engineer Associate, like if you want to go for Google Cloud Platform certification. So these all are comes into picture when you are actually doing your BTech or BE, like in your college. Like if you are starting with this certification while you are in college, you are having one of the very head start or all of the other candidates who do this kind of certification after the graduation. Then what about the different kind of roles or job opportunities? So basically there are so many different kind of roles, like depends upon the company, they provide the name. So these are the major categories, or you can say this kind of post in various companies, like cloud software engineer, cloud architect, operational support engineer, sysops administrator, DevOps engineer, or migration engineer. So if I talk about them brief, so cloud software engineer is basically a software development engineer, and which is basically utilizing cloud, any of public cloud platform to build their software. So this kind of role, like if you are interested in that, you can go for this role as well. Then cloud architect is basically architecting the resources or architecting the infrastructure for the different kind of business applications. So similar to our house architect, the way we deal with the home architect, how do we deal with that? Like basically we just tell them that this is the our space and how we can maximum utilizing this space. So they can suggest based upon their experience that hey, you can build this way, or like similarly cloud architect will do the same thing in the cloud domain. So they will architect your infrastructure based upon your business needs. Then we have DevOps and SysOps administrator, so which is relatively day to day deal with like cloud technologies. And depending upon the role, you will having like different kind of tools as well. For the DevOps, like Chef, Puppet, and Siebel, these are the tools which are quite famous. And then we last have the cloud migration engineer. So cloud migration engineer basically a person who is responsible for migrating their on-prem resources to the cloud. So which they, for that, like you are responsible. Then if we talk about the monetary part, so what is the average cloud engineer salary in India? So please allow me to tell you that these are some of the facts by the interview bit, and I'm not
claiming that it's 100% correct, but yeah, you can take a look and get some basic idea over it. So like if you have like this cloud skills and all, so you can see about, and this is the like good part about this is like this research has been conducted to the Indian markets, because in the Google if you search about cloud engineer salary and like they coming into the US salary, so it's not what we can say a correct way to look at the market. So depending upon your skills, it may be different, and depending upon your location it also play a huge role in the kind of pay you will get. So within the skills of the cloud engineer, you can look you can see like how much percentage of like skills required for the cloud engineer, or like if you want to go for any of these, it will be a good one. Yeah, some of the bonus tips I have for all of you is to like, many times we seen in the movies or motivational videos that hey, do what you like or find your passion or like that way. So the only practical way to find out your passion is to basically try different things. So what I used to do during like I'm having the weekends, like when I was in college, what I used to do, I was attending various of meetups, like not just in the same city, but in the different cities as well. And it's not about limited to the just cloud. I was attending the sessions for WordPress to Magento, then for the JavaScript, for AWS, for Google Cloud, and so many of various kind of meetups I have attended and meet different kind of people. So out of them, like if you start attending this session, you will get to know okay, these are some of the options you have available, and out of them you will pick and you will understand that hey, this is something you are really interested or want to know more about this. So that will help you to figure out like in the long run what you want to do, and based upon that you can build your career. And what I would suggest more on that, like while you are in college, just start documenting your journey. Like even if you learn about very basic thing, let's say like basic computing like program or C language program or any of this, so start putting that into like blog or any LinkedIn or Twitter or any kind of this platform which can bring you a lot of opportunity in the future. So documenting your journey is very important. And yeah, we are running like 100 days of cloud and these kind of challenges to keep boosted. Like people are doing 100 days of cloud learning on different kind of topics, and they just put all this learning on the other social platforms. So yeah, these are some of the cloud people like you can follow. So these are the like Dhaval Nagar, Chirag Nair, Andrew Brown. So Dhaval sir is basically from Surat, and he was my first mentor, and he's also running AWS user group Surat. So attending these events, I got a lot of opportunity to meet with other peoples as well. So similarly, I would highly recommend you to attending these kind of different events and finding these kind of different people who can help you. And you never know, you will reach to like you wanted to go. You will always be there, and your journey will be very smooth if you can learn from their experience. So yeah, you can also reach out to me for the LinkedIn and Twitter. I'm quite active on this platform. Like you wanted to connect with me and like have some queries. Yeah, thank you everyone. Like let's discuss some questions if you have. Thank you. Yeah, thank you, Nirmal, right, for your uh, that very important information about the cloud computing and how this cloud will be helpful for the future development of students. So once again, thank you very much, and on behalf of CSE RNGPIT, once again heartily thank you for providing us time for us from your busy schedule. So dear students, now let's move ahead.
And we have very eminent personality with us, Dr. Madhvi Desai ma'am. So I welcome Madhvi ma'am on behalf of RNGPIT. Dr. Madhvi Desai is the head of Computer Science and Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology. Madam has more than 15 years of academic experience. Ma'am is BOS member of Bhagwan Mahavir University Surat and also recognized as BOS member of Puka University Bado. She is university recognized PhD supervisor for computer engineering and currently supervising two PhD scholars. Ma'am has filed 3 design IPR and published more than 25 research papers in various international conferences and journals. She has rendered her service as a reviewer in many peer review process for reputed UGC journal and international conferences. Madam has given his service as member of advisory committee in international conferences. She has organized many workshops and HTTPs associated with IEEE Signal Processing Society, CSI, and Good Cause. Ma'am was also member of organizing committee member of national seminar on new trends in signal and image processing of IEEE SPS in association with IEEE Gujarat section. She is a professional member of ISTE, IEEE, ACM, and CSI. Ma'am has organized many workshop and training programs for the students of Computer Science and Engineering Department for their overall growth, development, uh, particularly professional development, and has delivered amples of expert talks to other colleges. All in all, we can say under her leadership, Computer Science and Engineering Department is growing in very rapid way. So once again, heartily welcome, ma'am. Now I request ma'am to please enlighten us with the Computer Science and Engineering Department of RNG PIT and activities carried out by. Please, ma'am. Thank you very much, Professor V.C. Joshi sir of Computer Department. And before starting my session, I would like to thank specially Mr. Nirmal Chodavya. Obviously, he is right now an employee of Amazon, but before that, he is our student. Okay, I think he has completed his BE before 2 years. Okay, so Yeah. I really, other than thanks, okay, rather than thanks, I would like to say that we really feel proud, both of us and whole computer department, that today we are. I can say that we are inviting you as an expert in our session, and we really feel proud on that particular part. Thanks, Nirmal. Yeah, thank you so much. I wanted to bring that out. I'm always grateful for our college faculties and members. So I really believe the kind of people who have helped me directly, indirectly, because of them I am, and because of their wherever I will be in the future, I'm always be grateful. And thank you so much, FETR, for inviting me as a guest. So it's really proud for me as well, like listening from other expert to sharing my journey or whatever I know. Yeah, thank you so much again. Okay, 1 minute, let me share a screen. Sure, ma'am. Okay, is it visible? VC Joshi sir? Yes, ma'am. Screen is visible. We Okay, may so continue. PPT is visible, na? Yes, ma'am. Perfect. Okay, okay, okay. So once again, welcome to all the particular participants of bootcamp. I hope that all of you have enjoyed all the session and you learn physically the different technologies. Today we have covered two important technology of the computer department, or we can say IT field, that is the cybersecurity and cloud computing. Now many of the students have and many of the parents have communicated with us that we want to know about the computer science and engineering department of RNGPIT. So I will take only 10 to 15 minutes of presentation, that will describe in a short way
that what we are doing at the Computer Science and Engineering Department at RNGPIT. So first of all, everyone wants to take particularly admission in computer science and engineering. So let me say first why to choose CSE at RNGPIT. So if I can say the features of RNGPIT, first of all, there is a highest placement student chapter of CSI, Google Developer Student Club. We have highly qualified faculties, free Wi-Fi facility with the 300 Mbps at the RNGPIT campus, department library, well-equipped laboratory, organization of industrial visit, pre-employment facility through the MCAT examination in each semester. We have Center of Excellence on Industry 4.0, which is sponsored by SAP and L&T. ESCRA Student Technical Magazine, industrial academic collaboration. We have MOU with the many of the industries. We have the specialization in artificial intelligence and machine learning. We definitely support for higher studies, highest ranking in the GDU examination, and we also provide the grant under SSI. So these are the basic features why you should choose us. So as I told you, we are also providing the specialization in artificial intelligence and machine learning. So you must have a question that what it means. So I can say that if you are taking an admission at Computer Science and Engineering Department of RNGPIT, you may have the choices that to get a degree. You may have the degree of B Computer Science and Engineering, or you can say that, or you can take a degree of B Computer Science and Engineering with specialization in artificial intelligence and machine learning. So this is again a GTU approved. Okay, you have to take four extra subjects in the semester 4, 5, 6, and 7. That is of the part of artificial intelligence and machine learning. You have to clear this examination. If you are taking this particular specialization, then you will have a degree of B Computer Science and Engineering, and with that specialization in artificial intelligence and machine learning, which is right now the trend. And for this particular course, we are always associated with the industry expert. They are also coming at our institute and they are taking the expertise lectures for our students. Faculty strength of CSA department. Okay, there are 4 to 5 faculties who are PhD pursuing, one with the PhD completion. Okay, so you can see, even you can visit our website also. So this is the strength of CSA department, our faculties. Lab infrastructure, we have 495 plus species, IoT lab, network lab, software engineering lab, database lab. We have, as I told you, that 300 Mbps with the free Wi-Fi facilities. These are the lab facilities. What are the scopes after computer science and engineering? Why you choose computer science and engineering rather than other branches? So I can say that you have 3 choices once you complete the B computer science and engineering. Either you can go for further studies in India or abroad. So if you want to go for further study, if you really want to study in the India or maybe abroad, then this is the obvious your choice that you should choose computer science and engineering. Then placement in reputed IT companies. Even everyone know that if I will consider the only super, okay, then we have 100 plus at least companies of the IT, particularly IT segments. So you have the placements available, and if you want to do a placement in the, or if you want to do a job in the reputed IT industries, then again, this is the best choice of the branch that you should take for the engineering. Then another part that nowadays no one want to do a job, or no one want to particularly, many of the person have the mentality that we don't want to job, we want to have startup, we want to be entrepreneur. Then this is the best choice to take the computer science and engineering, because it will be easy for all of you to be an entrepreneur. And our RNGPIT institute will even support in the form of the grant also for starting up of your business. Why industry what we industry expect from candidate, as there are so many computer engineers will be available. Okay, so what are the expectation of the industries? If I can say that they have the expectation that strong fundamentals of computer engineering, practical knowledge of the latest technology, and soft skill. So these all things we are providing through the GTU syllabus. That is, we are under the state government university, that is GTU. So they are designing the syllabus by considering all the aspects of the latest technologies.
Other than that, we have the advanced laboratories, we have the technological clubs for the students, we have the vocational training centers, mentorship support, and strong industry association. And as I told you, that technology clubs, in that one major club we have, that is the Google Developer Club. Then department activities, other than your teaching part, okay, we have the different department activities in each semester, that is the industrial visits, sports week, you can see the photographs, cultural program, tech face, Google Developer Student Club, day celebrations, expert talk, placement activities, and project fairs. So these are the, I can say that, some highlights of the activities of the department. Then, as I told you, Google Developer Student Club under the banner of Google. Now, you may have the questions that what is this Google Developer Student? So, basically, this is the student club that is in the computer department only. We are taking the students from the different years. Out of the students, we are selecting 5 to 7 students on the basis of their technological skills. Then these particular students are giving that particular biodata to the particular Google, and one of the student will be considered, will be selected as the representative of the Google Developer Club. Now he is the particularly, I can say that, coordinator of this particular student club, and other team members are available. So since last 4 years, we are having this particular club. We have 60 plus sessions and 550 plus participants in the different sessions. Then we have also a Computer Society of India. Okay, so this is again the one technological club. I can say that for the students, it is, we are having this particular CSI chapter since last 2 years. We have conducted various 10 plus sessions and 1600 plus participants of that particular sessions. These are, we are in news, that is the computer department of RNGPIT. You can see we are also organizing the various sessions, expert talk, workshops for the students by the government of the grant of the To Choose. We have this, as I told you, we have the Center of Excellence Lab sponsored by SAP, L&T, and others. So what is this particularly Center of Excellence? This particular Center of Excellence whole infrastructure, that is the sponsored by SAP, L&T, and Abul. So we have this particular Center of Excellence available at our institute. Now the benefits from this Center of Excellence, that industry persons will come in our particularly regular days. They will train our faculties also, they will train our students also on the various latest technologies like industry 4.0, that is the big data, then cyber security, if I can say that, deep learning, artificial intelligence, blockchain technology, neural network, and they will also train for the rapid prototyping. So that will be the benefits if you will take an admission at our department. We have the different MOUs with the different industries. So this is nothing but the highlight that we have the MOU with the different industries. Even students can go for internship. They are coming here to train our students, and they also come here for the placement of our students. If I say about the student achievements, we are always almost in top rankers in GTU and South Zone, and Devang Mehta IT Award since 2011, funded research project. We are particularly motivating the students to take the participation in national and state level various events. Then prototype development, financial assistance we are providing through the SSIP. So this is the, you can see various achievements. These are the various achievements of our students. Result. Obviously, as you are taking an admission, you want to take an admission into the department which you can get the best results. So these are again the some of the highlights. You can see that if I am considering only from the batch 2018. So 2018 batch, you can see first semester we have the first rank in the whole over June and second rank in the GTU. Then you can see again in second semester we have second rank in zone and third rank in GTU. Then if you are considering the third semester, then third rank in GTU and second rank in zone. In the same way, you can see for from 2018 to 20 consistently, we are always in first 3 rankers in the GTU. Then university toppers at state level. Our students who are appearing into GTU examination, that is the state level university examination. Okay, so this in this examination, our students are
toppers at the CSC branch in all over GTU. So you can say in the winter 2021 India Muhim, he is in the semester 5 goes with the rank 8 in all over GTU. Same way you can see the other students also. Okay, so there is a big list. I can say every time our students are toppers in the first, or I can say top 10s in the GTU. So you can see again, this is the one. Again, we are in newspaper. That is the we are again a base, good ranking in result in the GT. Placement cell. So what is new in our placement activities? So we have an MOU of the MCAT assessment with the aspiring mind. In this particular, what we are doing in this particularly MCAT assessment. So you can see here, CSA department has signed an MOU with aspiring mind Goregaon for pre-employment skill assessment test. So this pre-employment skill assessment test cover all the students of all the in the each and every 8 semester from semester 1 to semester 8. They are appearing for the MCAT examination in which various technical and non-technical modules are available. Okay, student will appear into this examination and they will get the results also. So student get the personalized feedback report for each exam during each semester reflecting strength or weakness. So they will come to know that which are their strength and which are the weaknesses, so they can overcome this particular weaknesses into the next examination. It measures the student overall skill required for the job at reputed MNCs. Through this particular pre-employment skill assessment program, I can say that 3,000 plus IT industries are considering this MCAT score for their recruitment process. So on the basis of this particular score, companies will ask you for the job. So 500 plus students have given MCAT examination till date, and 150 plus students are shortlisted for job opportunities. So if I can say that job search providers like LinkedIn and Monster.com, they are also accepting the MCAT test as an employability certification. So this is the one extra parameter we have at particularly CSA department of RNGPIT. These are the various placements provided through MCAT examination till now. You can see here. Then our placements of the department, if I am considering only the last 2 years placement, then admission batch 2016 who passed their examination or they received the degree of Bachelor of Engineering in Computer Department in the year 2020. So you can see here that from that particular batch we have 3.7% students are entrepreneur, 38.46% are placed in industries, 58.46% are were for the further studies, so 100% placement of the whole batch. Okay, if I am considering the 2017 batch who passed in 2021, so you can see here again 2.85% are entrepreneur, 34.28% placed in industries, 45.71% for further studies, so total 82.84% placements. So 82.84% does not mean that other students are not receiving the placement. We have always the opportunity of the placement, but these are the students who are waiting for their admission for the overseas students. These are the highlight of the our placement of Computer Science and Engineering Department. You can see here Disant Nayak who placed in TCS with this particular package. Bhumika Patel, he is data analyst at TD Bank, Canada. With this particular package, you can see here same way IOC in Veloya, then Asita Sa in Infosys, then Rajat Pugalia, that is Softline Services with this package. Hardik Solanki, 6.64 LPA in Birlasoft. Jayesh Chauhan was the team leader in SSM Infotech Surat with this particular package. So you can see here the whole summary that the various students who are placed in the various MNCs. Here you can see that Viva Systems, then again here that is the MTS, Amazon Web Development Services, then Reliance Communication, and TT Noida, then Case Point, here in Hazira again, then Cognizant. These are again students. You can see here TCS, Lane, Infosys, okay, Capgemini, Infosium, SRK. Okay, so these are the, I can say that some of the highlight of our students who are placed in the various reputed industries. Then
In if I'm considering the current batch, that is who are coming, who are in the final year, so 100% they are placed for the internship in various companies for the 2018 batch. So all the students who are in the final semester for the intern, they are placed for the internship in the various, particularly IT field industries. You can see even the domains they have selected as per their particular the choice, like cybersecurity, web cloud services, application design or development, data analysis, data science, web development. So in this particularly domain, students are placed for their interns. These are our key recruiters of 21-22 batch. Then many of the students who don't want to take a job because they want to go for the higher studies. So if I consider only the students enrolled in various university abroad, so you can see here our students are in various university like Ottawa, Canada, then Dayton, USA, then Texas, USA in Canada. So we are obviously providing the support for their further studies in overseas, even in India also. So these are the some highlights of that particular students. Then entrepreneurs. These are our pride of CSA department. I can say that obviously we also want that our students become the entrepreneur. They open the software industries and they take our students again for the job. So these are the some of the entrepreneurs you can see here: Ankit Kavani, then Kisan Dipani, Jaideep, Paresh Patil, Subham, Nirmal Bora, Ipsa, Hardik Bargalia. These are the entrepreneurs, or I can say that pride of CSA department of RNGPIT. They open their companies, they are partners in the various companies, and they are recruiting now our students for the placement. Thank you. Thank you very much, Madhvi ma'am, for the depth information about computer science and engineering department. Once again, on behalf of RNGPIT, I heartily thank you for your valuable time. Thank you very much. So dear students, let's move to the third and final session of day two of boot camp. That is session three, and session three is regarding basic understanding of and the future scope of artificial intelligence. So to deliver this session today, we have Professor Dharmishta Chaudhary. Madam is working as assistant professor in computer science and engineering department of Rng Patel Institute of Technology. She is pursuing her PhD in the domain of artificial intelligence and machine learning. She has 12 years of academic experience in CSE department of RNGPIT. She has published amples of research paper in different conferences and journals and has delivered numbers of expert talks to other organizations. So on behalf of CSE RNGPIT, I heartily welcome you, ma'am, and handing over to you to give us details about and the future scope of artificial intelligence and machine learning. Over to you, ma'am. Thank you, Vivek Joshi, sir, for providing this introduction. Thank you very much. I'm sharing my screen. Is my slide visible? Uh, yes, ma'am. Your presentation is visible. Okay. So today we are discussing about future of artificial intelligence and machine learning. So during this summer bootcamp, we are going to learn about this latest trends of AI and ML, and what is the future of this technology. We will discuss some of the projects. We will also look at the application as a beginner,
uh, which kind of the things that you can start up with. So these are the contents that I'm going to cover. Introduction to AI and ML, applications in today's world, career in AI and ML, few of the projects which are already developed by the students, as a beginner, how you can work with, and how we will design, how we can able to design the system using AI and ML. So these are the few contents that we are going to discuss during this session. So before having discussion about the future of AI and ML, let us have what do you mean by artificial intelligence. AI क्या है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है. So artificial intelligence, it is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machine that work and react like humans. तो इसको हम बोल सकते हैं कि when we have the human intelligent, human का जो इंटेलिजेंस पावर है वो हम मशीन को देना चाहते हैं. मशीन मीन्स द कंप्यूटर, द लैपटॉप, द टैबलेट, एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. तो ऐसा नहीं कि मशीन मतलब हम सिर्फ रोबोट की ही बात कर रहे हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. द सिस्टम और मशीन, इट कैन बी कंप्राइजेस ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो यहाँ पे जब हम एआई टर्म यूज कर रहे हैं तो सबके दिमाग में मतलब ये होता है कि नहीं, एआई मतलब हमें रोबोट का ही काम करना है, हम रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. We can also have the system which is based on the programs through which we can also have the conversation like human, right? So that is also the AI system. So it is a very broad term, but for the simplicity, for the understanding, I have used this very informal definition that here we are going to create intelligent machines that work and react like humans. तो ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वो हम मशीन को देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस कुछ फील्ड तक सीमित हो सकती है. जैसे कि वो फील्ड हो सकता है कि हम उसको ऐसा पावर दे रहे हैं कि माय मशीन कैन पुट अप द थिंग्स, प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Another thing is robot which is finding a path, right? So it depends that which system we are developing. हमारे पास ऐसी भी एडवांस सिस्टम है कि जिसके बेसिस पे हम उसको ह्यूमन की तरह उसको फीलिंग्स भी दे सकते हैं. तो उस टाइप के सिस्टम्स भी है, राइट? सो एआई अगेन इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म, and we have so many applications, so many things that we can develop using this AI. So just to remember is, here we are trying to provide the human abilities. Human abilities are thinking abilities, calculation abilities, reaction abilities, grasping abilities. So all these abilities we are trying to implant on the machines, and machines can be hardware or software. So here we are trying to create artificial intelligence to the machine, एंड हियर वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस. कि जैसे ह्यूमन बिहेव करता है, क्या हम मशीन को ऐसा कुछ दे सकते हैं? तो उसको हम अभी एआई का नाम दे रहे हैं. दिस आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ एआई. एआई कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो एआई की बहुत सारे डोमेन्स है, सब डोमेन्स आर देयर. सो एआई कैन बी divided, categorized into different categories, but it has some of the categories as machine learning, natural language processing, knowledge representation, automated planning, intelligent robot, and machine perception. उसके बहुत सारे सब डोमेन्स भी हैं. So here we will only focus on the major domains of AI. जैसे कि AI, machine learning, it is a part of the AI. As I have told you, AI is a very broader term. Machine learning in which we are providing training to the machine. So that's why the name is machine learning. Natural language processing. Natural language means right now I'm talking in English, I'm also talking in Hindi. So can my machine able to understand the natural language?
Can my machine able to understand the speech which we are delivering? So that is to be considered as a natural language processing. Knowledge representation, जैसे कि हम लोग in human memory, we are storing some ideas, we're storing the previous things, right? So same way, can we create a database of memory? So that can be represented through the knowledge representation. And can we recall the memory? So can my machine recall the memory of the previous things which I have told to the machine, right? So that is known as a knowledge representation and reasoning. तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग याद करते हैं कि कल मैंने क्या पढ़ा था, तो उसी तरह से क्या मशीन वो रिकॉल कर सकता है? तो उसको हम बोलेंगे रीजनिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस मेमोरी, क्या वो उसको याद कर सकता है या नहीं? ऑटोमेटेड प्लानिंग, जैसे कि हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कल मुझे कॉलेज जाना है, कल मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, कल मुझे उसके साथ यहाँ पे जाना है, कल फिर हम लोग मूवी के लिए जाएंगे. सो दैट इज अवर प्लानिंग. सो सेम वे, क्या मशीन वो प्लानिंग कर सकता है? अगर हम उसको टास्क दे रहे हैं कि तुम्हें ये 10 टास्क कंप्लीट करने हैं विद इन 1 आवर, तो क्या हमारा मशीन, क्या हमारा एआई प्रोग्राम प्लानिंग कर सकता है? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंट रोबोटिक्स तो हमें पता ही है, जैसे हम लोग मूवीज में उसका बहुत सारा एक्सप्लोरेशन हो चुका है कि रोबोट है कि जो फाइट करता है, रोबोट है जो टास्क परफॉर्म करता है, रोबोट है जो ह्यूमन की तरह बिहेव करता है. सो दिस आर द इंटेलिजेंट रोबोटिक्स. मशीन परसेप्शन दैट मशीन विल परसेप्ट समथिंग, मशीन कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है. सो ऑल दिस आर द डोमेन्स ऑफ एआई. इन सारे डोमेन के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. इसलिए हमने ये बोला कि AI is having so many categories. It can have different kind of the classification. So these are the some quotes from the famous person. What they are saying that it is a new age innovation. Like we can have the driverless car, right? हमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी if we have the AI based car. Other things we can have that is of the medical domain. We can have the smarter machines, right? So all these things are due to the AI. All these things are happened. All these things are possible only due to the artificial intelligence. Yeah. Now, as we have already seen that machine learning, it is a part of the AI. So what AI will do? AI will provide intelligence to the machine. And what machine learning, it is a subset of AI. So what it will do, it will take some training, it will learn from the given data, and it is used to predict some future data. So this is again very simple definition of AI and ML. Now, how this AI and ML is useful for the development of the industrial exploration. So previously, in 1760s to 1830s, all the industrial revolution, it will be working on the mechanization, steam and water power generation. So that is known as the Industry 1.0. After that, another revolution comes and it is known as Industry 2.0. And during that, mass production and electricity generation was a major issue. After that, from 1970 to 2000, the major development is done in electronic and IT system, and mainly they have focused on the automation. And nowadays, from 2015 onwards, now the entire system, entire industrial development, it is moved for the AI based, means intelligent system. So I'm sitting over here and now I want to make my fan on. So I don't want to stand up from my chair, right? यहाँ पे बैठ के मुझे फैन ऑन करना है, यहाँ पे बैठ के मुझे घर पे देखना है कि मेरे घर पे क्या हो रहा है. So all these things are only possible through this revolutionary machine learning. So what AI will do? AI will provide intelligence to the machine, and what machine learning, it is a subset of AI. So what it will do, it will take some training, it will learn from the given data, and it is used to predict some future data. So
changes of this AI and ML. So that's why what we are saying that industry 4.0 or industry 5.0, which is completely based on artificial intelligence. So here what we want is जैसे कि हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं और हमारा टास्क हो जाए, तो हमें इस टाइप की अभी सिस्टम चाहिए और भी कंफर्टेबल सिस्टम चाहिए कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आई एम वर्किंग विद सम इंडस्ट्री, आई एम वर्किंग विद सम प्रोडक्शन लाइन, और मुझे यहाँ से मॉनिटरिंग करना है कि मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ, राइट. सो अपने मोबाइल ऐप में मैं बैठ के मैं देख रही हूँ कि ओके इतना प्रोडक्शन हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग इंस्ट्रक्शन, आई एम ऑल्सो ऑपरेटिंग सम पर्टिकुलर डिवाइसेस. सो दैट इज द पावर ऑफ द AI. So that is to be useful in each and every area, and that's why we are saying that now onwards, 2015 onwards, all the systems, all the industrial revolutions, it will be based on artificial intelligence. Now we will discuss few of the applications of AI and ML कि वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है. ये सारी चीजें हमें पता है, we know all these things, right? But here we are trying to understand कि हमें और क्या चाहिए, हम उसमें और क्या क्या डाल सकते हैं, right? तो उसको समझने के लिए हम पहले उसके बेसिक एप्लीकेशंस कौन सी है. So first of all we will discuss them. So first application, it can be automated customer support. तो यहाँ पे जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और हमारे पास एक हमारा पर्सनल असिस्टेंस है जो हमें पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस टाइप की क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, राइट. सो इट इज नाउ fully customized. It is now fully customized. So one of the AI application is the chatbot. तो चैटबॉट क्या करेगा, थ्रू दी मोबाइल डिवाइस, थ्रू दी लैपटॉप, थ्रू दी सिस्टम, द चैटबॉट विल आस्क यू सम क्वेश्चन. इट कैन बी अ टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन और इट कैन बी वॉइस बेस्ड क्वेश्चन. वो आपको पूछ रहा है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी टाइप की, और आपको उसको इनपुट देना है कि मुझे इस कलर का, इस कलर की कपड़े चाहिए और उसमें ये फैब्रिक होना चाहिए और उसकी साइज ये होनी चाहिए. सो माय application, which is known as a chatbot, it can able to understand the voice command which is which voice command which you are providing to it, और उसको वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट दिखाएगा. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. आपको बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको वही चीजें दिखाएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है. तो अगेन यहाँ पे ये आपका टाइम सेव कर रहा है, राइट. ये आपका टाइम बचा रहा है और आपको जो चॉइसेस है, आपकी जो चॉइस है उसके हिसाब से वो आपको उसका कैटेगरी दे रहा है, उसका लिस्टिंग दे रहा है. सो इट विल बी वेरी इजियर. तो कस्टमर का एक्सपीरियंस यहाँ पे, कस्टमर इज सेटिस्फाइंग दैट ओके मुझे बहुत सारी चीज और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो मेरी पसंद है उसके हिसाब से वो मुझे सारी प्रोडक्ट दिखा रहा है. इट कैन बी एनी प्रोडक्ट. सो दिस इज वन ऑफ द ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट, एंड थ्रू दिस चैटबॉट इट विल कस्टमाइज योर रिक्वायरमेंट. सो पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस कि जहाँ पे वो आपको जैसे कि आप लोग शॉपिंग के लिए गए हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जब आपने कोई सर्च डाला है मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ओपनिंग योर टैबलेट और कंप्यूटर और लैपटॉप, तो ये क्या कर रहा है, आपको एक प्रोडक्ट दिखाएगा कि कल जो आपने प्रोडक्ट देखा था उसके सिमिलर प्रोडक्ट आपको वो दिखाएगा नोटिफिकेशन में कि दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द लोअर रेट कंपेयर टू द प्रीवियस सर्च. तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि कल मैंने शॉपिंग किया था लेकिन अभी मुझे उससे भी कम रेट्स में ये सारी चीजें मिल रही है, राइट. सो दैट इज अगेन वेरी कस्टमाइज शॉपिंग, वेरी पर्सनलाइज शॉपिंग दैट इट अलाउज. So timely alerts, message notification,
visuals, so it will be providing to the customer. So कस्टमर को अगेन उसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. कस्टमर कैन डू ऑल दिस थिंग्स through this AI-enabled technologies, where the algorithms which are used that will customize all these things. इसमें जो algorithm है, what they will do, they will store data. आपका जो सर्च डेटा है, आप लोग सर्च आप जब सर्च करते हो शॉपिंग वेबसाइट पे और उसमें आपने सर्च किया है कि XYZ प्रोडक्ट, राइट? तो उस प्रोडक्ट को वो लोग स्टोर करते हैं कि इस यूजर ने ये डेटा सर्च किया है, ये ब्रांड का डेटा उसको यूजफुल है. दे विल स्टोर दिस डेटा, they will apply the machine learning and they will provide the future directions कि ये कस्टमर नेक्स्ट डे ये सोचेगा और नेक्स्ट डे ये उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है. So that is very customized and very personalized shopping that you can provide. So that is also a very good applications of AI and ML. Healthcare is a major domain. Healthcare is a major domain nowadays because of this COVID pandemic. Because when we do not have to जब हमें डॉक्टर के साथ कांटेक्ट डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, एट दैट टाइम what we can have the personal assistant, we can have the AI based prescription. तो उसके हिसाब से आप अगर आपको कुछ सिम्टम्स है where you cannot directly have the physician, आप फिजिकली उनको नहीं मिल सकते हो, at that time we can have the AI powered technology through which it helps to analyze your symptoms and it will provide you the prescription. ये आपको prescription दे रहा है. So that is also the very emerging technology, and nowadays it is highly acceptable during this pandemic situation. Previously it was लोग उसको बोल रहे थे कि ये हम क्यों पर्सनल असिस्टेंट से क्यों हम ये सारी चीजें लेंगे. लेकिन जब कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन आई, जब हम फिजिकली किसी पर्सन के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, एट दैट टाइम दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर इन डिमांड. And nowadays, everybody is moving to this. Everybody is moving to have some therapist, some जैसे कि कुछ थेरापी के लिए हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन यू जस्ट प्रोवाइड मी दिस थिंग, ऑनलाइन यू जस्ट प्रोवाइड मी द कंसल्टेंसी, ऑनलाइन आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो. सो अगेन हेल्थ केयर इज अगेन very important domain in today's world, and many applications, many things we can explore with this particular domain. Smart cars and drones, as we know that अभी हम जितने भी व्हीकल्स है उसके अंदर AI बेस्ड सिस्टम है कि जहाँ पे वो आपको नेविगेशन दे रहा है थ्रू द वॉइस बेस्ड कमांड. आप उसको बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो उसके अंदर भी वो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है, एक तो वॉइस बेस्ड कमांड जो आपको दे रहे हैं आप उसको, तो वो क्या कर रहा है, आपकी वॉइस को वो कन्वर्ट कर रहा है. सो जो उस सिस्टम को समझ में आए. सो दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ AI. उसके बाद आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है आपकी कार को चलाने के लिए, तो उस इंस्ट्रक्शन को भी वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद वो नेविगेशन का जो सर्चिंग का जो एल्गोरिदम है वो रन करेगा और वो सर्च करेगा कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पे जाना है. सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपेंड ड्यू टू दिस AI and ML. So autonomous vehicles on road, autonomous जहाँ पे आपको कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आपको कुछ डिलीवर करना है, where you are saving your time, जहाँ पे आपको सिर्फ ये डालना है कि कहाँ से कहाँ उसको पहुँचाना है. So all these things are very revolutionary. It provides a very fast delivery, and which is most effective nowadays. And now most of the cars are having this kind of the devices through which it will be guiding you for the direction, for the tracking and all. और अभी उससे भी एक एडवांस सिस्टम आ गया है कि जो आपको डायरेक्ट करेगा
if some driver of the car he drunk, then also it will give some alert message, it will give some siren, right? So this kind of autonomous vehicles are also possible through this AI technology. ट्रैवल एंड नेविगेशन, तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, AI enabled mapping. Previously it was showing the path from source to destination, but nowadays what it will provide you, अभी वो आपको क्या दे रहा है, आपको वो मल्टीपल पाथ्स दिखाएगा कि दिस इज द वन वे, दिस इज द अनदर वे एंड दिस इज अ थर्ड वे, और वो दिखाएगा कि वे वन वे टू उस पे कंजेशन है, यू कैन सिलेक्ट द थर्ड वन, राइट? तो उस टाइप की वेरी कस्टमाइज नेविगेशन भी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट? सो दैट इज द एआई एनेबल्ड मैपिंग. AI enabled mapping, through this your traveling experience would be better and it would be very time saving. सोशल मीडिया पे AI एंड ML का यूज करके बहुत सारी चीजें उन लोगों ने दी है इन ऑर्डर टू चेक दी कस्टमर्स एक्सपीरियंस, कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए, फेसबुक पे उसको क्या चाहिए, उसको ट्विटर पे क्या चाहिए, उसको इंस्टा पे क्या चाहिए, राइट? तो सोशल मीडिया के ऊपर तो उन्होंने बहुत मशीन लर्निंग जिसके बेसिस बहुत ही अच्छी सर्विसेज वो दे रहा है. सो व्हाट दिस विल डू, सो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि फेसबुक यूजेस एडवांस मशीन लर्निंग टू डू एवरीथिंग फ्रॉम सर्विंग कंटेंट टू यू एंड टू रिकॉग्नाइज और फेस इन फोटोज टू टारगेट यूजर्स विद एडवर्टाइजिंग. तो यहाँ पे आप टैगिंग भी कर रहे हैं. For the advertising purpose, they are using this particular feature. Instagram is also uses AI to identifying the visuals. कि आप वीडियो में कुछ फेसेस या वो recognize, वो भी possible है. LinkedIn it uses to offer job recommendations. Yeah, this is very important. When you are using this kind of the social websites of LinkedIn, it will provide you the job recommendations. It will suggest to the people कि मेरा जो कलीग्स है उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यू कैन कनेक्ट विथ योर कलीग, यू कैन हैविंग द कनेक्ट विथ योर प्रोफेसर्स, राइट? सो ऑल दिस फीचर्स आर अवेलेबल विथ ऑल दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. And again, behind all these things, AI and ML, it comes into the picture. Smart home devices, as I have discussed, कि स्मार्ट होम में मुझे यहाँ पे बैठ के मुझे लाइट ऑन ऑफ करनी है, यहाँ पे बैठ के ऑफिस से बैठ के मुझे होम कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी सर्विसेज मुझे चेक करना है, मुझे मॉनिटरिंग करना है. सो विदाउट हैविंग ह्यूमन, मुझे वॉचमैन की भी जरूरत नहीं है, राइट? Through the smart home application, we can control so many devices, so many things we can control through the this IoT application along with the AI. Creative arts, AI powered technologies which can help musicians to create the new things. So this AI is not limited only for one person. It varies from person to person, that for so many applications this AI would be very helpful. Security and surveillance, where we can monitor the surrounding, we can monitor at our home, at our offices, right? And we can have multiple channels, we can feed the data, we can send some alert message, हम कुछ alarm भी generate कर सकते हैं. So for security and surveillance, this would be also very helpful. So Sophia, it is first AI humanoid robot which is developed by Hong Kong based company Hansen Robotics, and this would be useful. It will be useful for interacting like the human. So during one of the session, this conversation is happened, and Sophia has interacted with the student when they are appearing for the examination, and it has provided some guidelines that how to do the preparation and all. So like human, this interaction is happened, which is first humanoid robot,
And due to this AI technology, this can happen. So these applications are not limited to this many domains only. I have only discussed few of the application. You can explore it as a more applications. Now, career in AI and ML. आप इसमें क्या क्या कर सकते हो? So again, the scope is not limited, as I have mentioned over here. It is unlimited, but few of the scope we are going to discuss, so you will have more idea. So developing the machines in game playing, speech recognition, what I'm speaking, what is the meaning of the statement, right? Language detection, computer vision, expert system, robotics, and many more. So there are so many areas in which this AI and ML is very useful. And as the per the global spending for the next 4 years, it is said that compared to the 2020, more than 110 billion dollar will be spent for this technology for the year 2024. So now we need to have the system which will be proactive. So in advance, my system is telling me that, okay, this would be the prediction. This would be the weather prediction. This can be the stock market prediction. This would be the examination prediction, right? So now what we need is we need to have fully customized system, and we need to have the system which will predict the future, which will telling me the event which will occur in the future, and that is only possible with this AI. So that is the reason nowadays everybody is moving with this AI and ML. So again, these are some future directions like hospital and medicine, game playing, speech recognition, understanding the natural language, computer vision, cyber security, फेस रिकॉग्निशन, फेस को हमें डिटेक्ट करना है कि ये फेस जो है, जो मुझे एक क्रिमिनल को ढूंढना है, तो क्या ये फेस है वो क्रिमिनल के साथ मैच हो रहा है, राइट? सो फेस रिकॉग्निशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. तो जो भी फ्रॉड और ये सारी चीजें होती है, सो फॉर दैट थिंग दिस फेस रिकॉग्निशन इज वेरी यूजफुल. साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट पे जो भी फ्रॉड होते हैं तो उसको कम करने के लिए भी हम इंटेलिजेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं. थ्रू दिस इंटेलिजेंट algorithms we can prevent this kind of the happening. Transport, marketing, and advertisement. So these are the few of the opportunities. Again, it is not limited to this only. These are the again some career opportunities in India and abroad using AI and ML. So AI, it covers many areas like medical diagnosis, stock trading, robot control, scientific discovery, right? If you are having the degree and you are having a specialization in AI and ML, you can have the job opportunities into the very uh, reputed Indian organization like ISRO. We are having a DRDO, our defense organizations, right? So all the Indian top level agencies, they are now moving forward for the AI and ML. The AI jobs can be offered as a machine learning engineer, data scientist, business intelligence developer, research scientist, and AI engineer. Not only for the India, but also in the abroad. Many of the companies, many of again international companies, they are offering job in AI. Whether those companies are like NASA, which is working as a space science, many of the companies in US or Canada and Australia, they want now AI and ML based uh, people. So these are the again some career opportunities which are available with this AI and ML. These are the some few of the projects which are developed by the students of our institute, which I wants to very briefly discuss with you. This is one of the project of artificial eye, where the blind people can wear this glasses, and these glasses are having a camera on it,
it will detect the object nearby this camera. It will do the object detection, and whenever this object has been detected, it will inform to that blind person through the voice command. तो सिर्फ ब्लाइंड पर्सन को क्या करना है, ब्लाइंड पर्सन को ये जो स्पेक्स है वो उसको पहनना है, और जब भी वो वॉक कर रहा है, उसको जो भी ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है उसको पता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करके वो ब्लाइंड पर्सन को वॉइस कमांड से वो बताएगा कि ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज ए ट्री, दिस ऑब्जेक्ट इज ए ह्यूमन, दिस ऑब्जेक्ट इज ए टेबल. So this way it will detect the object, and it will provide that this object is in front of you. So now blind person can have the idea that the name of the object which he is facing, he or she is facing, and he can find its way. After providing the voice command, it will also guide for the direction as well. Another project is developed by the student, that is automatic railway crossing. So this project is the combination of embedded IoT technology, where these components are assembled. Some sensors are mounted near the railway track. This is the demonstration model. The railway track is shown over here with these blue tracks. Some barrier, the red line which you can see over here, that will be the barrier. As soon as the train is detected, and when it trying to passes through this particular barrier, the train movement, it has been detected by this sensor. And when this movement has been detected, that particular movement is to be sensed, and according to that, this barrier has been controlled. So this is the automatic railway crossing. Again, if there is a heavy traffic, if someone is under this barrier, then also it would be informed through the other sensors. So through this 2 or 3 sensors, the motions of the train as well as the motion of the vehicles are to be detected, and through this particular information, the barrier activity has been controlled without having any human. तो यहाँ पे हमें एक जो कंट्रोल कर रहा है बैरियर को, उस ह्यूमन की कंट्रोलर की यहाँ पे जरूरत नहीं है. वी हैविंग दिस ऑटोमेटिक बैरियर कंट्रोलर थ्रू दिस particular technology which is based on the sensors. So to sum up all these things, what we are trying to learn is how we can design the AI system, which is our major concern. हमें इंटरेस्ट ये है कि हम उसको कैसे बना सकते हैं. तो AI सिस्टम को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? आइडेंटिफाई और प्रॉब्लम. हम कोई भी एरिया में काम कर रहे हैं, हम किसी भी डोमेन के पर्सन हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर हमें एक कस्टमाइज AI सिस्टम डेवलप करना है, तो हमें क्या करना होगा? सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू हैव टू प्रिपेयर द डेटा. आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रिपेयर करना होगा. आपको एल्गोरिथम चूज करना होगा कि कौन सा एल्गोरिथम आपके डेटा पे सुटेबल होगा. उसके बाद हम करेंगे ट्रेनिंग ऑन द एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पे हम किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं? मशीन को. तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द एल्गोरिथम हम वो ट्रेनिंग देंगे एल्गोरिथम को, और उसके बाद वी आर चूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पे हमें ये करना है, एंड देन वी आर रनिंग our application, our solution on a selected platform. So that's it. So it's a very simple. There are many inbuilt tools are available where you can start your own AI or ML project. And these are the again in detail steps of the machine learning. जहाँ पे हम क्या करेंगे? हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को प्रिपेयर करेंगे. डेटा प्रिपरेशन मीन्स जो भी डेटा मिसिंग है, जो डेटा इनवैलिड है, उसको रिमूव करेंगे. मिसिंग डेटा को भी हम लोग फिलअप करेंगे. सो दैट इज नोन एज अ डेटा प्रिपरेशन. उसके बाद हम एक मॉडल चूज करेंगे कि किस टाइप की ट्रेनिंग हमें देनी है, उसके लिए कौन सा मॉडल सुटेबल है.
आफ्टर ट्रेनिंग हम जो ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि जो हमने ट्रेनिंग दी है वो करेक्ट है, जैसे ह्यूमन प्रेडिक्ट करता है क्या मशीन भी कर रहा है। उसके बाद अगर हमें कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है कि नहीं उसको ये प्रिडिक्ट करना था लेकिन उसने ये प्रिडिक्ट किया, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो उसने एरर है उस एरर को हम मिनिमाइज करेंगे। तो पैरामीटर ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि जहाँ पे हम हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि इस तरह से उसको प्रेडिक्शन करना था लेकिन उसने नहीं किया, तो उसको हम करेंगे सेट थ्रू पैरामीटर ट्यूनिंग से। एंड फाइनली when it has some very minor error, now we can go for the prediction. Our final step would be the prediction. So these are the steps for the machine learning. Why discussing this? Because one can start with this machine learning with your own area. And these are the few of the projects. As a beginner, you can start with the data set which is available on the Kaggle. मशीन लर्निंग का डेटा सेट आपको पहले चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो आप कैगल पे उसको जा सकते हैं। कैगल पे जाके इस टाइप के एप्लीकेशंस, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप अपने आप भी बना सकते हैं। दैट इज अवर मेजर कंसर्न कि थ्रू दिस बूट कैंप यू कैन एबल टू लर्न, यू कैन एबल टू डेवलप योर ओन एप्लीकेशन, राइट। सो होम वैल्यू प्रिडिक्शन, किसी जगह पे मुझे नया हाउस खरीदना है तो उसकी वैल्यू क्या है, तो वो मुझे प्रिडिक्ट करना है और उसमें से मुझे बेस्ट जो है वो चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। सेल्स प्रिडिक्शन कि कौन सी कंपनी का कितना सेल्स हुआ है, उसकी कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में चलेगी, कौन सी प्रोडक्ट नहीं चलेगी, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट। म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम, आई एम लिसनिंग अ म्यूजिक और जो मैं म्यूजिक लिसन कर रही हूँ सिमिलर काइंड ऑफ म्यूजिक इट विल रिकमेंड टू मी। So this is not only limited to the music, it is also applicable for the shopping. It can be a shopping recommendation system. Iris flowers classification, ये भी एक प्रोजेक्ट है जो आप एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे फ्लावर्स, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स दिए हुए हैं, उसका डेटा आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको एक एल्गोरिदम सिलेक्ट करके आपको उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करना है। So these are the basic level projects you can start up with. Stock prices predictor, stock market का आप previous कुछ data ले रहे हो and based on that you are predicting for the future values. So that is also possible. Hand written digit classification, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4, राइट, अलग अलग पर्सन की राइटिंग अलग होती है, तो क्या मेरा मशीन आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये 4 है या 1 है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी मेजर एरिया ऑफ द एआई। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी आप वर्कआउट कर सकते हो थ्रू द अवेलेबल डेटा सेट। टेक्स्ट समराइजेशन, जैसे कि मैंने एक चैप्टर रीड किया हुआ है और मेरा एक दोस्त है जो जिसने ये चैप्टर रीड नहीं किया हुआ है, तो मुझे आके बोल रहा है कि भाई मेरे पास 5 मिनट है तो मुझे पूरा चैप्टर समझा दो। तो जो बंदे ने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है वो उसको 5 मिनट में समझा देगा कि अगर ये आएगा तो तू ये लिख देना, ये आएगा तो ये लिख देना। सो इट इज अ समराइजेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर। सो सेम वे मशीन को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, मशीन को हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके हिसाब से वो आपका जो बुक है, आपका चैप्टर है, आपका मटेरियल है, आपका पेज है, उसको वो समराइज कर रहा है जैसे कि हम लोग करते हैं। सो दैट इज नोन एज अ टेक्स्ट समराइजेशन विच इज ऑल्सो इन डिमांड इन नाउअडेज। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट कि जहाँ पे वो आपको गाइड कर रहा है कि अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आप ये करो, आपको ये सिम्टम्स है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकता है। फेशियल रिकॉग्निशन एंड फीवर डिटेक्शन, जैसे कि अभी कोविड में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे स्कूल है, कॉलेजेस है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहा है कि ये पर्सन जो है उस पर्सन को फीवर है कि नहीं। सो थ्रू दिस एप्लीकेशन हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि नहीं भाई ये पर्सन है, उसको फीवर है, ओके उसको साइड में कर दो, उसका हम
क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगे, उसको कोविड हो सकता है. So again, these are the applications. Disinfect robots, these are the high level applications कि जहाँ पे it will be disinfecting all the objects through the ultraviolet rays. Disinfectant spraying robots. So these are the again automated robots which they are spraying the sanitizer. AI powered wearables are also there कि जहाँ पे आप अपना स्मार्ट वॉच है आपके पास, आप अपना हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हो, आपकी हार्ट बीट वो सुन रहा है, आपने कितने स्टेप्स वॉक किया है तो वो भी आपको चेक कर रहा है, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स आर AI powered wearables through which you can continue continuously monitoring your symptoms कि आप की कंडीशंस अभी गुड है, आपका कुछ हेल्थ इश्यू है, एंड इमीडिएटली योर वेरेबल डिवाइस विल इन्फॉर्म टू योर डॉक्टर, योर फिजिशियन, राइट. So these are the AI powered wearable and which will be providing you real time monitoring. So these are the some basic projects which are useful in day to day life, and this through this application you can explore your knowledge in this AI and ML domain. And these are the some resources and references that I have used to prepare this presentation. Thank you. Yeah, thank you very much, ma'am, for your guidance and providing information about importance of artificial intelligence and how what are the practical aspect and how it will be helpful for our students. So once again, on behalf of RNG Patel Institute of Technology, I heartily thank you for spending the time for us. So, dear students, so I wish to have one announcement to all the students. संडे को हमने कैरियर गाइडेंस कम एडमिशन प्रोसीजर अवेयरनेस के लिए सेमिनार का आयोजन किया हुआ है, जहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा क्या कौन कौन सी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ है और कैरियर गाइडेंस रिलेटेड सेमिनार आपको दिया जाएगा. तो ये सेमिनार ऑनलाइन रहेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर कर देंगे. जितने भी स्टूडेंट अभी फ़िलहाल अटेंड कर रहे हैं, उसका जो भी फ्रेंड सर्कल है, उन फ्रेंड सर्कल को आप रजिस्ट्रेशन लिंक कन्वे कर सकते हैं. अगर आप लोग आपके फ्रेंड्स को भी सर्टिफिकेट चाहिए 3 डेज़ बूट कैम्प का, तो वो ये बेनिफिट ले सकते हैं. So now let's end this session with our final expert, Professor Kimsuk Desai. So I I heartily welcome Professor Kimsuk Desai, Senior Faculty of Chemical Engineering Department, to provide information about the opportunities in chemical engineering, and how chemical engineering department of RNGPIT is providing quality-based education. In this occasion, I wish to share that chemical engineering department of RNG Patel Institute of Technology is NBA accredited. So let's hear from Kimsuk Desai regarding the achievements of chemical engineering department. Professor Kimsuk Desai has more than 10 years of academic experience in the field of chemical engineering. Sir is currently pursuing PhD from Gujarat Technological University and has published amples of research paper. Now I hand over to Kimsuk Desai sir for his speech. Please sir.
afternoon, all. Thank you, Professor Vivek Joshi, sir. Good afternoon to all the respected Principal of RNGPIT Institute of Technology, Dr. Hitesh Chaudhary, sir, all the head of the departments, my colleague faculties, and dear students who are taking opportunities and benefits from the bootcamp organized by RNGPIT Institute of Technology. I hope you have enjoyed the day too. So, as a representative of the chemical engineering department, let us discuss some of the glimpses of the chemical engineering department as well as chemical engineering branch. We will spend 2 to 3 minutes initially to understand chemical engineering branch and its vital opportunity, job opportunity, and exposures available. So, first of all, chemical engineering, a field of versatility that we know. But why it is calling as a field of versatility, let's understand about that first. So, chemical engineering is as old as the process industry. Earlier, fermentation and evaporation processes operated. In earlier 90s, there is a evolve of chemical engineering world because initially only chemists are looking forward to the processes, and as time passes, there is a requirement of continuous processes, there is a requirement of scale up, and along with that, its requirement arises for the engineer who is having the knowledge of the processes, basics of the chemical engineering, uh, let's say reaction kinetics, chemistry, we can say, as well as the knowledge of the scale up, we can say designing of the plant equipments, how we can design the plant equipments to scale up the processes. So during the early 90s, there is a evolve of chemical engineer who is having the knowledge of both the sides. So initially, there is a development of petrochemical industry that chemical engineering become a firmly established as a unique discipline. As time passes, in chronological order, many applications have been found in the fields outside the traditional chemical industries. The opportunities found are some of the opportunities are, we can say, processes of plastics, polymers, synthetic fibers, pulp paper manufacturing, fertilizers for the continuous production of foodstuffs, pharmaceuticals. There is a critical role in manufacturing of modern drugs, in nuclear industry for the fuel manufacturing and reprocessing, in metal processing industry. Apart from steel manufacturing, there is a critical role in separation of rare metal extracts. In the second half of the 20th century, there is a critical role of chemical engineer in space exploration in the manufacturing of propellants. So here we can see that there are vast and versatile sectors in which chemical engineering domain is involved. And due to that, we can say major areas or sectors where chemical engineers are having the important roles are biomolecular engineering, process industries, in designing computer process designings, where various designing softwares applications are involved, nuclear science, nanotechnology, which is one of the emerging field, health and safety sectors, environmental engineering, and in manufacturing and application of the advanced material engineering. So as there are the various domains, so obviously there is a vast opportunity in the jobs or in the various sectors, we can say. So some of the domain important sectors of the chemical engineering are automobile, aviation, agriculture, energy sector, FMCG sector, marine manufacturing industry, metal and mining, oil and gas, pharmaceutical industries, process industries, and many more. Even in robotics, also there is a role.
specified role of chemical engineer. So chemical engineers can be employed in the design and development of processes and scale up of the plants. So there are the some of the major areas we can understand easily: fertilizer industry, petrochemical industries. So as domain is very vast, so there are some of the big names of the industry also involved, like Reliance Industries, Naira Energy, previously known as SR, IOCL, IFCO, Gripco. Some of the pharmaceutical leaders I can name as Sun Pharma, Zydus Cadila, Lupin. In fertilizer industry, we can say UPL, RT Industries, Colortex, Inox Wind, Suzlon Wind, DCM Sriram, Rallis India. Some of the PCUs in where chemical engineers can play a critical role are GNFC, GSFC, HPCL, BPCL, Indian Oil, Cripco, etc. So why I am telling you that, so you can have the idea that what is the importance of chemical engineering and what are the domains. And we can say most of the major domains are related with the basic needs of the human beings, like energy sector, petrochemical sector, in specific of the energy sector, in food industry, in pharmaceutical industry. Majorly some of the engineers use, among them is chemical engineer. So there is a huge opportunity available. So that is all about the basics of the chemical engineering. Now coming to the chemical engineering department of RNG Pid Institute of Technology. Department was started in the year 2010. The department offers undergraduate program Bachelor of Engineering in Chemical Engineering. Along with that, some of the specialized courses also offered. I am coming to the specialized courses offered later on. The program is approved by AICTE New Delhi and affiliated with the Gujarat Technological University. The total intake available is 60. The faculty and staff members of chemical engineering department are starting with the principal of RNG Pid Institute of Technology, Dr. Latesh B. Chaudhary sir, who is MTech PhD in chemical engineering domain. Sir is having a vast experience of 24 years and regularly sir is involved in the teaching learning processes of the department. The head of the department and associate professor Dr. Jaydeep C. Bharat sir. Sir is having a vast experience of 23 years. Sir is having PhD in chemical engineering. Dr. Amish B. Patel sir. Sir is having PhD in chemistry. The doctoral faculties available in chemical department are Dr. Julie M. Pardiwala, Dr. Himanshu P. Kohli sir. Himanshu sir has recently completed PhD from SVNIT, Surat. Myself, Professor Timsuk Desai. Another my colleague faculties who are having ME, MTech in chemical engineering are Professor Piyush Nakam sir, Professor Pushpajit Barad, Professor Dhaval Patel, Professor Hitesh Ramchandani, Professor Ravi Sen, Professor Aska Chauhan. All the faculties are having the master degree in chemical engineering. I am proud to say that chemical engineering is accredited with NBA along with the mechanical engineering department for the upcoming 3 years. And NBA accreditation itself speaks about the quality in teaching learning. Means the better placement opportunities already provided to the students. NBA accreditation speaks that better infrastructure facilities already available in the terms of curriculum, laboratories, project labs, etc. Better exposures provided to the students for the curricular activities like industry visit, internships, expert speeches, seminars, etc. And of course, availability of doctorate and master degree holder experienced faculties in the department. The initiatives taken by the faculties are faculties continuously involved in learning and improvement for the students. Research papers from the faculties published in peer-reviewed journals. Not only traditional chalk and board teaching, but faculties are also using ICT tools like virtual labs, NPTEL lecture notes,
technical videos for the regular teaching learning process. Department also regularly organizes industrial visits, expert speeches, etc. Now, from 2021, RNGPIT is offering GTU approved specialized courses in 3D printing, artificial intelligence and machine learning, waste treatment technology, industrial process safety, in which waste treatment technology and industrial process safety are main domain of chemical engineering. So question arises that along with the regular graduation, why specialized courses have been offered? So RNGPIT has taken the initiation among the more than 100 colleges available under the Gujarat Technological University. We have taken the initiatives to offer the specialized course. We have seen from the our past experience that apart from the regular graduation degree, some of the specialized skills are required in industry. And if along with the regular degree, if students is having the specialized skills in the terms of specialized minor degrees available, then job opportunities increases in the terms of salary also and in the terms of the another job opportunities availability also. For example, I would like to take one example. If a student is taking industrial process safety course, so along with the regular BE chemical engineering degree, student is also having the exposure to the industrial process safety. So when student is appearing for the job interview, so employer will keeping in note that student is already having the exposure to the process safety. So when student is coming to the industry for the job purpose of view, it is already having the exposure, brief exposure, primary exposure of the importance of the process safety, safety in regularly used in industry, safety in being utilized in the process onto the ground level of the industry. So there will be a plus point added to the resume of the students. So that is a very much important one. So in chemical engineering department specifically, two specialized courses have been offered approved by GTU from the academic year 2021-22, industrial process safety as well as wastewater treatment technology. So after successful completion of the 4 years, student will be awarded as BE Chemical Engineering honors with specialization in industrial process safety or waste treatment technology. Student can also take the benefit of specialization in 3D printing as well as artificial intelligence and machine learning also. From from fourth semester to seventh semester, the specialized courses will be offered, and any of the student from chemical engineering department as well as of the other departments can join from the any of the four minor courses offered by the RNG Patel Institute of Technology. So for example, let's say student from mechanical engineering is doing is considering to go for the minor degree in industrial process safety. So student will have the degree after 4 years as BE honors in mechanical engineering with minor degree in industrial process safety. And obviously, as you are having the another additional degree during your minor degree during your 4 years of curriculum only, so that is like a Sone Pe Suhaga. So employability and job opportunities, obviously that is going to be huge. So let's take an example. We are choosing the industrial process safety as a minor course. So some of the areas are fire prevention protection engineer, product safety engineer, process safety test engineer, system safety engineers, etc.
brief of the curriculum of the process safety. There is one survey that, let's say, along with the graduation degree, if students is having any of the specialized course, so it is having the some plus benefit in the terms of salary drawn. So this is the some of the numbers salary drawn by the candidates who is having this specialized course along with the graduation. So some numbers will be increasing compared to the another students who is having only regular graduation completion degree. So chemical engineering department is also a nodal institute. So chemical engineering department functions as nodal institute of Industries Commissionerate, Government of Gujarat, under the stewardship of Anchor Institute, Chemicals and Petrochemical Sectors, Faculty of Technology, Dharmasi Desai University, Nadiad. So under Nodal Institute, department has developed state-of-art process automation laboratory, ChemCAD laboratory, Nodal Training Center, under which regularly workshops, short-term and long-term training programs have been organized in association with Anchor Institute of DDU Nadia for the students, faculty members, and industries in the region. These are some of the glimpses of the activities done under the model institutes. Various laboratories available in chemical engineering department are instrumentation process control, ChemCAD lab, chemical reaction engineering lab, mass transfer lab, project lab, etc. The glimpses of the some of the laboratories are, that's a chemistry lab, there's a ChemCAD lab. In ChemCAD lab, we are having the licensed version of ChemCAD 7.0. For that, institute have signed MOU with Indigenous Solutions Private Limited, Mumbai, for ChemCAD suite simulation software. There is a mass transfer lab, process control management lab, instrumentation and process control laboratory. Some of the glimpses of another laboratories like chemical reaction engineering laboratory, process instrumentation laboratory, mechanical operations laboratory, project laboratory. Chemical engineering department is also having the AICHE student chapter, American Institute of Chemical Engineers student chapter is available in chemical engineering department, and under the AICHE student chapter, regularly we are organizing various technical as well as non-technical programs for the students. Chemical engineering department is having the testing, consultancy as well as research activities. Under that, chemical engineering department is GPCB approved, Gujarat Pollution Control Board approved Schedule 1 Environment Auditor since 2012. And our laboratory is having the certification of accreditation for National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratories, NABL, accreditation with ISO IEC 17025 2017. That's a ISO certification having for the environment audit laboratory, and environment audit carried out at the various industries. Some of the industries are SR Steel, Reliance, Colortex, Gripco, DCM Sriram, BEIL, Atul, UPL, etc. Obviously, as in-house facility is available, so exposure is provided to the students in the terms of students are giving the exposure to the industries very much easily. Students are provided exposure to the sophisticated instruments available in JPCB approved Schedule 1 laboratory. The specific instruments available for the ambient air quality monitoring, fuel stack quality monitoring, process stack quality monitoring,
wastewater quality monitoring. The students are going to have the exposure for the specific equipments available in-house. Chemical engineering department has successfully concluded research project on quality assessment of Tapi River in association with Center of Environment Science and Engineering, IIT Bombay and JK Paper Mills, Songar. And during that period, Dr. Amit Arora sir and Dr. Karmakar sir from IIT Bombay visited our institute for the research work allocated by the GPCB, Gandhinagar. Some of the glimpses of the industry visits done on regular basis for the students. Above photograph is from CSM CRI Bhavnagar, industry visit carried out at CSM CRI Bhavnagar. Then another picture is for Color Tex Vilayat. Then PI Industries, Sugar Industry Bardoli. Another some of the industry visit at JK Pepper Mill, Gripco Surat, Palsana Protection Limited, Adani Port Hazira, Colortex Vilayat, Sachin, etc. In RNG Patel Institute of Technology, we are also having the Entrepreneurship Development Cell, and under that, Student Startup Innovation Program Cell is active, and RNGPIT in association with SSIP Cell, Government of Gujarat, have established SSIP Cell to help the future technocrats to build their prototypes and working model, and for the approved projects of the students, RNGPIT is providing a funding up till 10 lakhs, and in chemical engineering department, two of the students groups have already awarded with the grants from SSIP. The students from chemical engineering received grant of 1.10 lakhs for the project titled Advanced Wastewater Treatment Using Griffin. The project is guided by our principal of RNGPIT, Dr. Latesh B. Chaudhary sir. And another group of the students from Chemical 17 have also received the grant of 35,000 from the SSIP cell of RNGPIT for the project titled Extraction of Essential Oil from Aloe Vera using different extraction methods. So along with the regular teaching learning processes, students are also provided the exposure to develop their research abilities as well as their entrepreneurship skills. There is a glimpse of some of the expert speeches arranged in the department. Glimpse of project fair arranged for the final year students. Every year for the final year students, we are arranging project fairs, and for the evaluation of the each group, we are inviting some of the experts from the reputed academics or industries to evaluate the project groups. There is a glimpse of the project fair organized. The research achievements of the past 2 years of the department have been listed here. Every year, department is doing exceptionally well in the result. We can see here the result of the departments of the various semesters. In last result only in summer 2021, our two of the students, Chisla Ignace and Rahul Sode, have secured 10 out of 10 SPI in semester 8, and our 64 students out of total 69 students have scored above 8 SPI in 8 semester examination, and the total department result of 8 semester is 98.5 percentage. Some of the press releases of the department. This is pass out students placement status, which is of much more important for the students who are right now going to think to have the admission in the chemical engineering department, or they are thinking of building their career in chemical engineering branch after completing their graduation
So these are the some of the digits. I am focusing on to the last point. In 2018, our current batch is going on. Current batch is for from today only. Their final examination have been just initiated, and before completion of their final degree, we can say before completion of even their final examination, Act- already 10 students have been placed in the industry. And among the 10 students, the 8 students have been placed in Colors Lab Grown Diamonds, Colors Industries, who is dealing with the nanotechnology based technologies. And this is the glimpse of the our 8 of the students who have been placed in Colors Industries. This is the glimpse of campus drive of Macleod Pharmaceuticals, who have placed our 12 of the students of Chemical Engineering Department of Chemical 15 batch. In next year, again Macleod Pharmaceuticals have placed our 4 of the students. Another some of the placements are placement in spectrum dyes and chemicals. There is a glimpse of campus drive of environment innovation Surat. The glimpse during the final conversation with the selected 4 students in the campus drive of environment innovation. The list of the some of the students already placed, already working in reputed industries. The industries with our students working, and some of the industries are Adani Ports, UPL, Atul, Macleod Pharmaceuticals, Aarti Industries, GACL, Naira Energy, Reliance Industries Limited, Zydus Life, Sterling, PI Industries, Cheminova, Amoli Organics, and so on. So before concluding, I just want to uh, make a statement that looking to the future, it is probable that chemical engineering will have a very important and critical role to provide the solution to at least two of the world's major problems. First one is supply of adequate fresh water in all the regions, probably in future through desalination of the seawater, which is one of the which is going to be the one of the major problem in coming days. And another is in environmental control through prevention of the pollution. So these are the main critical problem going to be faced by the world, and in that chemical engineers are going to have the very critical as well as important role to solve the problem. Thank you. I will stop from here, and if any kind of input and suggestion or question is there, you can ask. So thank you very much, Kim Suk sir, for your insightful information about chemical engineering department, scope of chemical engineering in future. Again, I wish to share student that on Sunday we have organized career guidance seminar for students who have appeared for 12th standard examination. This seminar will be through online mode. You can attend it using YouTube channel of RNGPIT or Facebook page. This seminar will be on 8th of May Sunday, and it will start around 11 a.m. What are the scopes available for you in future? What are the good engineering colleges? What are the important parameters to select any engineering college? What is the admission procedure? What kind of scholarship schemes are available? What kind of documentation is required? All this information will be provided in this seminar. So the details about this seminar will be shared soon.
So let's at this point I am winding up day 2 of online bootcamp. Tomorrow we will have again 3 sessions. The detail of, regarding day 3 will be shared through your WhatsApp. Thank you everyone.